मॅडम जॉईन झाले आहेत. ओके ओके. मोरे मॅडम आहे तर काय कोणता नंबर आहे काय? मोरे मॅडम का? लाईव्ह स्ट्रीमिंग झाले बरं. सुनंदा मोरे आहेत सर. आले मदत गेली असं झालं. पाठ निघला. धन्यवाद. Dear participants, we will start the inaugural function soon. Please stay tuned. Vice Chancellor sir join. We will start the session. VC sir आलेत का? हॅलो राकेश सर, चालू करायचंय. पीसी सर एमसीच्या मीटिंग मध्ये आहेत म्हणे, नंतर जॉईन करतो म्हणजे. ओके ओके ओके. बोंदर सर आलेत. हॅलो सर. काय वेळासारखं करायला प्रत्येक वेळेस खोडा लागते. एकच शब्द किती वेळेस खोडा लागेल? हो 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 ठीक. हो 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 ठीक आहे. A very good evening to all the participants who have joined over here to this inaugural function of the 1 week lecture series on mathematics. It gives me immense pleasure to welcome all the dignitaries, teachers, student participants, and all my colleagues to this online 1 week lecture series on mathematics organized by Department of Mathematics, IQSC, and the YCMU Study Center of Digambara Bindu College, Bhokar. This is an event organized to join the celebration of
Azadi Ka Amrit Mahotsav, an initiative of Government of India to celebrate and commemorate 75 years of progressive India and glorious history of its people, culture, and its achievements. As this Mahotsav is dedicated to the people of India, we as an higher education institution have come forward by dedicating several events to our students with a view to enhance their potential and enable them to activate our Prime Minister Modi ji's vision of India 2.0, a self-dependent Atmanirbhar Bharat. We are fortunate, our inaugurator, due to some emergency meeting, will join soon, very soon. We are fortunate to have among us Honorable Vice Chancellor of SRTM University Nanded, Honorable Dr. Uddhavji Bhosle, as the inaugurator of this lecture series. I also welcome Honorable Dr. Madhavrao Patil Kinhalkar, the President of our institution and Chairperson of this inaugural function. I welcome the Chief Guest, Dr. Sunanda More, Director, School of Architecture, Science and Technology, Yashwantrao Chauhan Maharashtra Open University, Nashik. I also welcome the guests of honor, Dr. L.M. Wagmare, Dean Faculty of Science, Dr. K.L. Bondar Sir, Joint Director, Higher Education Pune, and Dr. D.D. Pawar, Chairman, Board of Studies in Mathematics. I also welcome the Chief Organizer of this event, our proactive principal, Dr. Punjab Chauhan Sir, all the resource persons, teachers, student participants, and my dear colleagues. Friends, we have a long list of dignitaries on this joined on this online platform. So without taking much time, I directly request Principal Dr. Punjab Chauhan Sir to cast his welcome address. Principal Sir. Sir, mute sir. Principal Dr. Punjab Chauhan Sir, may I call upon you to cast the welcome address? Hello, sir. Deshmukh sir, kindly unmute principal sir. नाही सर, त्यांच्याकडूनच हे करा. सर तुमच्या डिव्हाइस वरून एकदा ट्राय करा तुम्ही. प्राचार्य साहेब, मी आज करतोय सर. हा, तुमच्या डिव्हाइस वरून एकदा ट्राय करा. देशमुख सरांकडून तुम्हाला अनम्यूट केलेलं आहे. सर म्यूटच्या बटनला अनम्यूट करा सर. हॅलो, ते नॉट अलाउड म्हणाले म्हणे साहेब तिथं अनम्यूट करते वेळेस.
if respected principal sir has some problem, may I request sir to move to Dr. S.B. Chavan sir for introduction? Your welcome address will be rescheduled after which is joining. Oh, I should have called. Why don't you Okay. when VC joins? Prashant ji. Hello. Prashant. Yes, sir. I am talking to him. Yeah. Why don't you Sir. start when the VC? Yes. Because there will be another break then. Yeah. Yes, sir. There is a slight change. May I request Dr. S.B. Chavan sir, the convener of this lecture series, to introduce the event to the gathering. Dr. S.B. Chavan sir. Okay, sir. साहेबांना call करा. A very good evening to all the dignitaries and participants. The inaugurator of this lecture series, Honorable Vice Chancellor Dr. Uddhav Bose. चव्हाण सर तुम्ही म्यूट आहात. चव्हाण सर म्यूट झालात तुम्ही. सर आवाज येत नाही. Yeah, okay. Chief guest of this event, Dr. Sunanda More ma'am, Director School of Architecture, Science and Technology, Yashwantrao Chauhan, Maharashtra Open University, Nasik. Guest of honor, Dr. L.M. Wagmare sir, Dean Faculty of Science, SRTMU, Nanded. Dr. Bondar sir, Joint Director, Higher Education, Pune. Dr. D.D. Pawar sir, Chairman, BOS in Mathematics. The chief organizer of this event, respected our principal, Dr. Punjab Chauhan sir, all these resource person, teachers, my colleague and dear students. Join this online 1 week national level lecture series on mathematics, organized on the occasion of a celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav, the 75th year of Indian independence. All of us know that our beloved Prime Minister of India, Modi ji, has said before the country his vision of an Atmanirbhar Bharat 2022. The Culture Minister has called for celebrating this Azadi Ka Amrit Mahotsav on government, institutional and individual level by various celebration and working on innovative ideas in different fields. Our college has organized various events to join this celebration. The development of mathematics, this Department of Mathematics and IQSC and YCMU Study Center of our college have jointly organized the online 1 week lecture series on mathematics. In this lecture series, 8 eminent resource persons will be impart their experience and expertise in different areas of mathematics. The lecture series will be beneficial for BSc and MSc mathematics students to shape their ideas and work on different innovative aspects in mathematics. Our department and IQSC has organized several workshops and seminars in the past also. The last year we organized in collaboration with IQSC SRTMU Nanded a 1 week workshop use of MATLAB for practical in mathematics. 1,234 students for different colleges in the the direct beneficiaries of this mega event. It helped teachers to conduct practical online in the COVID situation. In this current lecture series, also we have received huge support from students and teachers of mathematics. More than
600 students have registered for this lecture series. I congratulate all of them for their interest in mathematics and their trust in our efforts. The Vice Chancellor of our university, sir, is present here. The inaugurator take his presence as a token of his appreciation of our efforts. I am grateful to him for his constant support. I also feel privileged that a galaxy of intellectuals have once again give their ever ready for response to my call. I am thankful to the chief guest of the guest of honor, all research person, and all dear teachers for continuously on the lecture series. I am also thankful to the supporting managements of our college, the motivation by Honorable Presidents Dr. Madhurav Patel Kinarkar Sahib and respected Principal Dr. Punjab Chauhan sir for all the support in organizing this event. I also thankful to the organizing committee for their sincerely efforts. I hope this event will be helpful for the students and teachers of mathematics. I wish all the success to this lecture series and conclude my introduction. Thank you. Thank you once again. Thank you, sir. Thank you, Chavan sir. The convener of this lecture series, who comes up with innovative ideas time and again, is the problem of Principal sir's mic. Principal sir, are you able to join with your audio? Yes. I request Principal Dr. Punjab Chauhan sir to cast his welcome address. स्वातंत्र्याच्या Not audible. हॅलो, येतो ना आवाज? हो सर, हो सर. There is some problem in audio. हॅलो, No sir, येतो no ना sir. आवाज? Audio is clear, sir. The problem is on local network, sir. Of the Breaking. person. Yes. No. Hello? Sir, you carry on. Sir, तुमचा आवाज चांगला लाऊड क्लिअर येतोय. अच्छा, ओके. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त दिगंबरराव बिंदू महाविद्यालय भोकर जिल्हा नांदेडच्या वतीनं आयोजित या 1 वीक राष्ट्रीय स्तरावरील लेक्चर सिरीजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माजी मंत्री आदरणीय डॉक्टर माधवरावजी पाटील किनाळकर साहेब, जे या सिरीजचे उद्घाटक होते आदरणीय कुलगुरू डॉक्टर उद्धवजी भोसले सर, ते मीटिंग मध्ये अडकल्यामुळे या ठिकाणी उपस्थित राहू शकले नाही. ते आदरणीय डॉक्टर कुलगुरू उद्धवजी भोसले सर, या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं खास उपस्थित असलेले आमचे मित्र पुणे विभागाचे विभागीय सहसंचालक एल बोंडर सर, वायसीएमयू विभागाच्या विज्ञान तंत्रज्ञान आणि स्थापत्य विभागाच्या संचालक आदरणीय डॉक्टर सुनंदा मोरे मॅडम, या ठिकाणी उपस्थित असलेले माझे मित्र गणित विषयाच्या अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष डॉक्टर डी पवार सर, या कार्यक्रमाचे संयोजक गणित विभागाचे आमच्या महाविद्यालयातील विभाग प्रमुख डॉक्टर सतीश चव्हाण, वायसीएमयू केंद्राचे केंद्र संयोजक डॉक्टर राधाकृष्ण होगे सर, ज्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यामध्ये अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावली, असे सर्व IQC चे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अरविंद चव्हाण आणि सर्व या कार्यक्रमामध्ये सहभागी असलेले सर्व प्राध्यापक, विद्यार्थी, गणित विषयाचे संशोधक विद्यार्थी, या सर्वांचं दिगंबरराव बिंदू महाविद्यालयाच्या वतीने मी मनपूर्वक स्वागत करतो. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आमच्या महाविद्यालयामध्ये गेल्या 2-3 वर्षामध्ये या कोविडच्या काळामध्ये अनेक
ई कॉन्फरन्स असतील, ई वेबिनार असतील किंवा अशा लेक्चर सिरीजच्या माध्यमातून आम्ही जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणाच्या संदर्भामध्ये खूप चांगलं ज्ञान देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आहे. गणित विभागाच्या वतीनं गेल्या 3 महिन्यापूर्वीच ऑनलाईन प्रॅक्टिकल विद्यापीठ स्तरावर घेतलेलं होतं. त्यामध्ये 1250 विद्यार्थी सहभागी झालेले होते. ते एक फार मोठी अचीव विद्यापीठाच्या स्तरावर आमच्या महाविद्यालयाला मिळालेली आहे. त्याचबरोबर गेल्या 2 वर्षापासून विज्ञान शाखेच्या वतीनं कंट्रीवाईड क्लासरूमच्या संकल्पना या ठिकाणी राबवली. देशातीलच नव्हे तर अनेक विदेशातील नामवंत प्राध्यापक, विचारवंत असणाऱ्या लोकांनी आमच्या विद्यार्थ्यासाठी, आमच्या विद्यार्थ्याबरोबरच महाराष्ट्रातल्या अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा आमच्या महाविद्यालयाच्या वतीनं करून दिलेला आहे. त्याचबरोबर या सगळ्या कार्यक्रमामध्ये वेगवेगळ्या विभागाच्या वतीनं, विशेषतः इतिहास विभागानं मूर्तिशास्त्रावर एक सुंदर असं 30 दिवसाचं सत्र आयोजित केलं आणि अनेक विचारवंतांनी, देशातल्याच नाही तर विदेशातल्या सुद्धा अनेक मूर्तिशास्त्रावर अभ्यास असणाऱ्या विचारवंताची विचार आमच्या विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचवले. त्याचं ज्ञान त्यांना मिळवून देण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केलेला आहे. ह्या शिक्षण प्रक्रियेमध्ये सगळ्यांना सहभागी करून घेण्याची भूमिका सातत्यानं आमच्या महाविद्यालयाची राहिलेली आहे, आमच्या संस्थेची राहिलेली आहे. दिगंबरराव बिंदू महाविद्यालय हे या दृष्टीनं आम्ही पुढे आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत की अनेक उपक्रम विद्यार्थ्या राबवायचे आणि ते विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचवायचे. आणि त्या दृष्टिकोनातून आमच्या महाविद्यालयातला सर्व स्टाफ असेल, विद्यार्थी सुद्धा असतील, या सर्वांनी उत्तम रीतीनं सहभाग नोंदवला आणि त्या दृष्टिकोनातून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टिकोनातून असे कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय झालेले आहेत असं आम्हाला वाटतं. आज जवळपास 150च्या वर विद्यार्थी या कार्यक्रमामध्ये अनेक जण सहभागी आहेत. हे एक त्याचं द्योतकच म्हणावं लागेल. महाविद्यालयानं अकॅडमिक बाबतीमध्ये, गुणवत्तेच्या बाबतीमध्ये खूप चांगले उपक्रम त्या ठिकाणी राबवले आणि गुणवत्ता टिकून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त त्याचा लाभ मिळवून देण्याच्या दृष्टिकोनातून सातत्यानं प्रयत्न केलेला आहे. विज्ञान शाखा ज्याच्या वतीनं, विज्ञान शाखेच्या वतीनं अनेक उपक्रम, सायन्स एक्झिबिशन सारखा प्रोग्राम सुद्धा आम्ही ऑनलाईन पद्धतीनं राबवला. अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांना त्यामध्ये सहभागी करून घेतलं आणि त्यांचे विविध उपक्रम विद्यार्थ्यापर्यंत, अनेक अगदी प्राथमिक स्तरावर म्हणजे प्राथमिक शाळेतल्या विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा उपक्रम त्या ठिकाणी राबवलेले आहेत. म्हणजे विज्ञानाची गोडी कशा पद्धतीनं लागेल विद्यार्थ्यांमध्ये हे सातत्यानं आम्ही आमच्या महाविद्यालयाच्या वतीनं प्रयत्न करत राहिलेले आहोत. हे लेक्चर सिरीज हा त्याचाच एक भाग आम्ही हे आयोजित करण्याचा पाठीमागाची भूमिका होती. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्तानं देशाला आज 75 वर्ष झाली, स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष होत आहेत आणि त्या निमित्तानं हा कार्यक्रम केंद्र स्तरावरून घोषित झाला की तुम्ही वेगवेगळे कार्यक्रम, उपक्रम राबवा आणि हा महोत्सव एक महोत्सवाच्या अंतर्गत हा अशा प्रकारचे उपक्रम राबवून लोकांना स्वातंत्र्याचं महत्व जाणवून द्या, हा या पाठीमागाचा उद्देश होता. म्हणून स्वातंत्र्य आणि स्वातंत्र्याचा महोत्सव आणि हा उपक्रम अशा प्रकारचं एक सांगड घालून आम्ही याचं आयोजन या ठिकाणी केलेलं आहे. त्या निमित्तानं यामध्ये सहभागी असणाऱ्या सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचं, त्याचबरोबर सन्माननीय विद्यार्थी वर्गांचं, प्राध्यापकांचं मी मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो आणि या उपक्रमामध्ये सहभागी झाल्याबद्दल महाविद्यालयाच्या वतीनं मनपूर्वक आभार सुद्धा मानतो. महाविद्यालयाची गणित विभाग असेल किंवा आयक्यूसी डिपार्टमेंट असेल, या दोन्ही डिपार्टमेंटनं हा उपक्रम या ठिकाणी आयोजित करून आमच्यापर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न केला. त्याबद्दल या दोन्ही विभागाचे डॉक्टर सतीश चव्हाण असतील, डॉक्टर अरविंद चव्हाण असतील आणि वायसीयू विभागानं सुद्धा या ठिकाणी विशेष योगदान देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. कारण आमच्या इथं यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या वतीनं MSc मॅथमॅटिक्स हा कोर्स चालवला जातो. म्हणून त्याचे जे काही संयोजक आहेत, केंद्र संयोजक डॉक्टर राधाकृष्ण होगे, या तिघांनी संयुक्तरित्या ही लेक्चर सिरीज घेण्याचा मनोदय व्यक्त केला. विशेषतः डॉक्टर सुनंदा मोरे यांनी आम्हाला फार मोठं सहकार्य केलेलं आहे. त्याचबरोबर येथील विभागाचे जे काही शिक्षण समन्वयक आहेत, डॉक्टर BK मोहन सर, यांनी सुद्धा हे कार्यक्रम घेण्यासाठी आम्हाला प्रोत्साहित केलं. त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार मानतो. मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू
असेल किंवा आपल्या विद्यापीठाचे कुलगुरू असेल, दोन्ही कुलगुरूंना ह्या प्रोग्राम राबवण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्हाला सहकार्य केलं त्याबद्दल मी मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि या ठिकाणी माझं प्रास्ताविक थांबवतो. जय हिंद. Thank you very much, sir. Respected principal has mentioned many events carried out by the various departments of the college. Recently, we have concluded an event called Countrywide Classroom, which is open for all university students on different syllabus, topics of syllabus. And as the Honorable VC has given a word to join after some time, I will go forward. I will choose to go forward and request the chief guest, Dr. Sunanda More Madam, to cast her views on the event. Over to you, Dr. Sunanda More Madam. Thank you, sir. Good evening, everyone. I'm very happy to be a chief guest on this occasion. I am very much thankful to our study center, Digambarao Bindu Art Commerce Science College, Bhokar, for organizing such an very innovative one-week national level lecture series for the students of mathematics on the occasion of 75th Azadi Ka Amrit Mahotsav. This study center is running this our program from 2015 till date, and this study center is running very well, and I am very happy that now the students are taking admission to MSc Mathematics program, because I was feeling that this mathematics is a course which many of the students, they don't like, they don't have some reservations about the mathematics course, and they have some sort of Excuse me, ma'am. त्यांच्या मनामध्ये. I request Hello? Deshmukh sir to excuse me, ma'am. Ha, sir. I request Deshmukh sir to please remove the disturbances. I request all the participants to please mute their mics while the speaker is speaking. Yeah, thank you so much. So I'm very happy, sir, that our nowadays students are getting enrolled for mathematics course at PG level, because I was thinking that many of the students, they are having some afraid about mathematics, but now the picture is changing, and this is a very innovatively you have arranged 1 week national level seminar lecture series for our student as well as for all other students also, those who are interested in mathematics course by your and a very eminent experts you have. I have seen many of them, they have contributed in our learning material development also. So with this, I again appreciate the work which you are going to carry out in this week, and I wish all the best for this event which you have organizing for the students by the Department of Mathematics and by our study centers. I know many of them, our coordinator, Dr. Radhakrishna Hoge sir, and Dr. Satish Chauhan, and many other organizers, they have taken efforts to organize this event, and I wish all the best and all the success for this event. As well as on this online inaugural session, many other dignitaries are also present. Dr. Madhavrao Patil Kinhalkar sir, he is the president of this institute. I also thankful to him for giving support for this occasion and for organizing this lecture series. I also thankful to our principal of this college, Dr. Punjab Chauhan sir, because see sir, all kind of administrative and financial support is very essential for organizing such type of innovative activities throughout the year for the students as well as for the teachers, so that they can be motivated and they can be upgraded their knowledge. I also appreciate. Yes. Anything else?
I also appreciate the presence of Dr. Kiran Kumar Bandar sir, Joint Director, Higher Education Pune, for his presence in this online lecture series. Also, I welcome all the other dignitaries also who are present here in online session, as well as on the YouTube platform, as well as those who are working in front or back front. Okay, and along with this, I also wish to share that Yashwantrao Chauhan Maharashtra Open University, this is Maharashtra jurisdiction we have, and we are running our various courses throughout Maharashtra, and with the from the School of Science and Technology, Architecture, Science and Technology, we are also running various types of science courses at diploma, UG and PG level. Okay, but our university is running a variety of the courses from art, commerce, science, education, computer science, agriculture, and all to PhD level. Now, when you talk about the innovation, our university has also contributed at different level, and we are also doing a lot of innovations in our education system. Like, as you are aware, from last 2 years we are in pandemic, and pandemic is going on, and everywhere online education is going on. So our education system is also blended mode of education. So our this is our open education philosophy, open and distance learning education philosophy, because here our student goes to the study centers. We organize teaching learning at the study centers, and also we give support. We on web-based support we provide audio lectures, we provide video lectures, we do provide lectures on the YouTube platform, we do provide online counseling to the students. So this is one type of blended mode of education. And now everyone in the conventional system, they are moving toward the online education because of such type of pandemic situation which has occurred in all over the world. So this means everyone has followed our pattern, we can say that. And also in our university, when we say that what university is doing now in education system, तर आमच्या विद्यापीठाने आजतागायत अनेक उपक्रम, नाविन्यपूर्ण उपक्रम तर राबवलेलेच आहेत. पण या पॅन्डेमिक मध्ये या विद्यापीठाने जे नाव लौकिक मिळवला तो म्हणजे वाखाणण्याजोगा आहे. विद्यापीठाच्या गेल्या 5 इव्हेंट पासून ज्या परीक्षा आहेत ऑनलाईन पद्धतीने विद्यापीठाने कंडक्ट केल्या. ऑनलाईन ऍडमिशन ते ऑनलाईन एक्झामिनेशन हे सगळं विद्यापीठांनी अगदी व्यवस्थितपणे ह्या एक्झाम्स कंडक्ट झाल्यामुळे आज विद्यापीठाचं नाव हे म्हणजे महाराष्ट्र शासनाला त्याच्या दरबारी अतिशय चांगल्या पद्धतीने रिपोर्टिंग झालेलं असल्यामुळे आज पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या विद्यापीठाचं नाव लौकिक या ऑनलाईन एक्झामिनेशन सक्सेसफुल केल्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये विद्यापीठाचं नाव झालंय. त्यासोबतच म्हणजे नवीन आम्ही जे काही योगदान करण्याचा प्रयत्न करत असतो त्यामध्ये आमचं करिक्युलम डिझाईन करण्यापासून, म्हणजे जेव्हा आम्ही कुठल्याही शिक्षण क्रमाचा सिलेबस तयार करतो, ते सिलेबस तयार करण्यामध्ये जी आमची एक मेथोडॉलॉजी आहे, सिस्टमॅटिक डिझाईन अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द करिक्युलम, त्याच्यामध्ये आम्ही लेटेस्ट रिलिव्हंट कंटेंट देण्याचा प्रयत्न करतो. जर आपण सगळ्यांनी जे आता रिसोर्स पर्सन्स आहेत, इफ यू गो थ्रू द सिलेबस ऑफ अवर MSc मॅथमॅटिक्स प्रोग्राम or any other program, you will find out that the program is very well designed. The syllabus is very well designed. The thought has been given. The thought is given on the basis of that student ला जे काही बेसिक काही कोर्सेस असतात, स्कॉलास्टिक्स कोर्सेस असतात, कोअर कोर्सेस असतात, ते तर त्यांनी शिकलेच पाहिजे. त्यासोबतच त्याला काही ॲडव्हान्स आणि करंट जे काही कोर्सेस असतात ते कोर्सेस सुद्धा आम्ही देण्याचा प्रयत्न करतो. त्या पद्धतीने आमचं हे सिलेबस आम्ही डिझाईन करतो. आणि ते डिझाईन करत असताना आमचे जी काही एक्सपर्ट रिसोर्स पर्सन्स असतात ते सुद्धा सगळ्या विद्यापीठांमधले असतात, रिनाउंड पर्सन्स असतात, आणि त्यांच्या मदतीने आम्ही हे सगळं करतो. अशा पद्धतीने जेव्हा सिलेबस तयार होतो, सिलेबस नंतर आम्ही त्याची पुस्तकं तयार करतो. जर पुस्तकं तुम्ही आमची ही बघितली सर,
म्हणजे मी आता सगळ्यांना सांगते की अपील करते की आमची जी पुस्तकं आहेत ती आमच्या विद्यापीठाच्या वेबसाईटवरती आहेत आणि ही जर पुस्तकं तुम्ही जर बघितली तर त्यामधनं तुमच्या लक्षात येईल की मेटिक्युलस अप्रोच जो असतो आमचा प्रोग्राम डेव्हलपमेंट आणि सेल्फ मटेरियल जे आम्ही म्हणतो, प्रिंट मटेरियल जे आम्ही पुस्तकं विद्यार्थ्यांसाठी तयार करतो, तर हे सगळं तयार करत असताना अगदी मेटिक्युलस पद्धतीने आमची ही पुस्तकं आम्ही विद्यार्थ्यांसाठी तयार करतो. त्यासोबतच या ऑडिओ व्हिडिओ कंटेंट आम्ही हे डेव्हलप करतो. हे विद्यार्थ्यांना एज्युकेशनल क्वालिटी बेटर करण्याचा कसा प्रयत्न करता येईल त्याचा मॅक्सिमम आम्ही प्रयत्न हे आम्ही विद्यापीठाच्या वतीने, स्कूलच्या वतीने आणि आमचे सगळे प्राध्यापक मंडळी, विद्याशाखेमध्ये काम करणारी मंडळी याचा सातत्याने प्रयत्न करत असते. त्यासोबतच नाविन्यपूर्ण आणखीन काही गोष्टी आपल्याला करता येतील का शिक्षण क्रमांमध्ये याचा आम्ही विचार करतो. ऑनलाईन काउन्सिलिंग सुद्धा आता आमचं सध्या आम्ही सुरू केलेलं आहे. म्हणजे कालपासूनच ऑनलाईन काउन्सिलिंग पण आपण सुरू केलं आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने BSc आणि MSc च्या काही विषयांसाठी आपण हे देतो आहे. नंतर मार्चमध्ये सुद्धा आपण परत ऑनलाईन काउन्सिलिंग सगळ्या सेंटर्सच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी आपण ऑर्गनाईज करणार आहोत. या पलीकडे आणखीन एक महत्वाची गोष्ट आता यावर्षी जी आम्ही आता इंट्रोड्यूस केली आहे तर ती एक नमूद करावीशी वाटते. सिन्स ऑल द एक्सपर्ट्स आर फ्रॉम व्हेरियस रिजन्स, सो आय वुड लाईक टू शेअर, आय एम व्हेरी हॅपी टू शेअर दॅट म्हणजे विद्यापीठाने यावेळेस होम असाइनमेंटचा हा जो कन्सेप्ट असतो किंवा कंटिन्युअस असेसमेंट आपण म्हणू की कंटिन्युअस असेसमेंट जे असतं, जे रेग्युलर सिस्टीममध्ये त्याला वेटेज दिलेलं असतं. काही विद्यापीठ 20% देतात, काही 30% देतात. हिअर वी आर गिव्हिंग वेटेज टू कंटिन्युअस असेसमेंट टू 20%. आणि त्याच्या मागची भूमिका ही अशी आहे की विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करावा, त्याचं फीडबॅक हा त्या काउन्सिलरनी त्याला द्यावा. कंटिन्युअस असेसमेंट होम असाइनमेंटच्या फॉर्मॅटमध्ये आपण त्याला देतो आणि त्याचा फीडबॅक हा काउन्सिलर जो त्या विषयाचा असतो त्या विषयाच्या काउन्सिलरनी हा फीडबॅक हा विद्यार्थ्याला दिला तर तो विद्यार्थी त्याच्या एज्युकेशनमध्ये त्याची इम्प्रूव्हमेंट तो करू शकेल आणि त्याला मोटिवेट करण्याचा प्रयत्न त्यातून करता येईल. तर हा त्याचा मागचा उद्देश आहे. या गेल्या काही वर्षांमध्ये आमचा काही असा अनुभव होता की आम्हाला वेळेमध्ये काही सेंटर्सकडनं मार्क्स मिळत नव्हते आणि त्यामध्ये काही अडचणी येत होत्या. म्हणून यावेळेस आम्ही आता आमच्या एक पायलट बेसिसवरती होम असाइनमेंटसाठी सुद्धा आम्ही ऑनलाईन करण्याचा प्रयत्न केलाय. जो आमच्या सध्या BSc शिक्षणक्रम जो आमचा आहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथमॅटिक्स, तर त्याच्यासाठी आम्ही फर्स्ट सेमिस्टरच्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन होम असाइनमेंटचा कन्सेप्ट आता इम्प्लिमेंट केलाय पायलट बेसिसवरती. सो लेट अस सी हाऊ दॅट सक्सेस वी विल गेट, बिकॉज याच्यामध्ये काय होईल की विद्यार्थ्याला त्याची होम असाइनमेंट ही लिहायची आहे, लिहून त्याला ती अपलोड करायची आहे. अपलोड केल्यानंतर जो इव्हॅल्युएटर असेल तो इव्हॅल्युएटर ती चेक करणार आहे ऑनलाईन माध्यमातून आणि त्याचे मार्क्स सुद्धा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मलाच त्याला द्यायचे आहेत. तर अशा पद्धतीच्या काही गोष्टी दरवेळेस विद्यापीठ सातत्याने राबवण्याचा प्रयत्न करतं आणि ऑनलाईन ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आता बऱ्याच गोष्टी आपल्याला कदाचित करता येणं सहज शक्यही होत आहे. आणि त्यामध्ये आम्हाला आमच्या या सगळे जे काही अभ्यास केंद्र आहेत हे आमचे सगळे म्हणजे आमचे टीचिंग लर्निंग युनिट्स आहेत आणि त्या टीचिंग लर्निंग युनिट्स आणि तिथल्या स्टाफच्या सहकार्याने या विद्यापीठांनी ही एवढी मोठी उत्तुंग झेप ही घेतलेली आहे. अशाच पद्धतीची ही झेप आमच्या सगळ्या अभ्यास केंद्रांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये ही घ्यावी आणि आपले जे काही विद्यार्थी आहेत त्या विद्यार्थ्यांसाठी, तुमच्या रेग्युलर विद्यार्थ्यांसाठी आणि या विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा असेच तुम्ही नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवावेत. त्यांच्यासाठी लेक्चर सिरीज आयोजित कराव्या, त्यांच्यासाठी चांगले एक्सपर्ट्स, तुम्ही रिनाउंड एक्सपर्ट्स तुम्ही त्यांना बोलवावे, त्यांची व्याख्यानं त्यांच्यासाठी ठेवावी, त्यांच्याकडनं त्यांचं टीचिंग लर्निंग व्हावं अशी अपेक्षाही मी या ठिकाणी व्यक्त करते. आपल्या सेंटरचा विद्यार्थी हा उत्कृष्ट विद्यार्थी म्हणून हा बाहेर पडला पाहिजे. ही शुड बी ऑफ बेटर क्वालिटी दॅन अदर्स आणि त्याच्यामध्ये जो काही कॉन्फिडन्स असेल तो कॉन्फिडन्स त्याला कसा बूस्ट करता येईल आणि त्याला पुढे त्याचं करिअर कसं घडवता येईल याचा सातत्याने जर सर्वांनी आपण या एज्युकेशन सिस्टीममध्ये काम करणारे आपण सगळेजण आहोत, म्हणजे तुम्ही, आम्ही, विद्यापीठातली मंडळी, कॉलेजची मंडळी, इतर कॉलेजेसची मंडळी आणि रिनाउंड पर्सन्स जे काही आहेत आपले एक्सपर्ट्स, या सगळ्यांनी जर हा करण्याचा प्रयत्न केला तर निश्चितपणे तुम्ही ब्रिलियंट विद्यार्थी
ही आपली पास आउट होतील आणि या समाजामध्ये ते चांगलं काम करू शकतील. मॅथमॅटिक्स हा असा कोर्स आहे की जो एक बेस आहे, तुम्हाला रिसर्च आणि इनोव्हेशनसाठी एक बेस असतो आणि त्याच्यामध्ये जर विद्यार्थ्यांनी चांगली सक्सेस जर त्याला मिळू शकलं तर तो पुढेही त्याचं भविष्य आयुष्य हे चांगलं घडवू शकेल. या आझादी का अमृत महोत्सव या कार्यक्रमाच्या प्रसंगी आपण सगळ्यांनी इथे उपस्थिती दर्शवली आणि मलाही 2 मिनिटं माझे मत भावना व्यक्त करण्याची मला संधी आपण आयोजकांनी दिली. त्याबद्दल मी सर्व आयोजकांचे, या अभ्यास केंद्राचे आणि जे आभार मानते आणि माझे इथे 2 शब्द मी संपवते. थँक्यू सो मच. थँक्यू. Thank you, madam. Thank you very much for sharing your valuable time with us, for motivating us and appreciating our efforts. As the Honorable Vice Chancellor has conveyed his unavailability. Mute करा please. विजय, सर्व पार्टिसिपंट्स ला पुन्हा पुन्हा रिक्वेस्ट आहे की आपले माइक्स म्यूट ठेवावेत. We have shouldered the responsibility of inauguration on Dr. L.M. Agmare, Dean, Faculty of Science, and expressing my gratitude to him to accepting this change with a short notice. May I request Dr. L.M. Agmare sir to formally inaugurate the event and give his inaugural address. Dr. L.M. Agmare sir. Chief guest of today's function, Dr. Sunanda Amresh, Madam, Principal of the college, Dr. Punjab Rao Chavan sir, D.D. Pawar sir, coordinators S.B. Chavan, A.B. Chavan sir. At the outset, I congratulate Digambara Bindu Arts Science and Commerce and Science College Booker for organizing such unique activity. At the outset, I express my sincere thanks for giving me an opportunity to be the part of this program. To begin with, I will program is inaugurated because anytime any online disturbance will come. So I'm declaring that the unique event, good event is inaugurated. I really appreciate the efforts taken by the Department of Mathematics of Digambar Rao Bindu Arts, Commerce and Science College for organizing the lecture series on mathematics. Mathematics subject is generally taken as difficult subject to avoid the mathematics from the mathematics. Those the students who are having the interest in the mathematics, they are opting to go for the higher education in the mathematics. I appreciate the efforts. I appreciate the participants also because they are shown interest in such difficult subject, and the Digambara Bindu College is making efforts to make this take this subject to the students in a different way. Digambara Bindu Arts, Commerce and Science College has organized many activities during this pandemic situation, online activities. They have conducted many courses, many workshops, and particularly the staff of the mathematics department of this college is very proactive in organizing this activity. Not only proactive, but they are also acting as a resource persons in these events. They are not just organizing the activity. I personally believe that this delivery is one of the best way to reach the maximum number of students. Not only the students of the Open University, but the students of, in general, students also. I personally feel that we should not restrict ourselves for this particular, only for this workshop, but we need to take this kind of concept to the
different subjects of the various courses. I had a discussion with the Dr. S.B. Chavan sir regarding organizing similar kind of workshop for the BSc Mathematics course. So we'll definitely work on it. I once again express my sincere thanks for giving me an opportunity to be part of this program. I once again declare that this event is inaugurated, and I conclude my speech here. Thank you very much, sir. Please. Thank you, sir. Thank you very much for your constant support. Now, may I request the guest of honor, Dr. K.L. Bondar sir, to express his views on the organization of this lecture series. Dr. Bondar sir. नमस्ते आदरणीय किनाळकर साहेब, या महाविद्यालयाचे प्राचार्य, आमचे मित्र चव्हाण सर, माझ्या सोबत दिसतात मला आमचे डायरेक्टर स्कूल ऑफ मॅथमॅटिकल सायन्सेस डी पवार सर, माझे मित्र आहेत चांगले. आत्ताच ज्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं मोरे मॅडम आणि आपले वाघमारे सर, डीन फॅकल्टी ऑफ सायन्स SRTMU नांदेड. तसेच माझे मित्र SB चव्हाण सर, स्टुडंट आहे तो माझा, पण मी त्याला मित्रच म्हणेन. इज माय डायरेक्ट स्टुडंट आणि जो की आता सध्या आपल्याकडे काम करत आहे. मित्र हो, सर्वप्रथम मी या महाविद्यालयाला आणि त्याच्या व्यवस्थापनाला शुभेच्छा देतो आणि त्यांचं अभिनंदनही करतो की मॅथमॅटिक्सची अशी ऍक्टिव्हिटी त्यांनी त्यांच्या महाविद्यालयात ऑर्गनाईज केली. कारण कुठलंही असो, मला वाटते चांगल्या गोष्टीसाठी कुठलंही कारण योग्यच असतं. अगदी चांगली गोष्ट विनाकारण केलेली सुद्धा योग्यच असते. त्याच्यामुळे जरी आपला आझादी का जो आहे 75 वर्ष होण्याचं या ऑकेजननं मॅथमॅटिक्सच्या बाबतीत जेव्हा एखादी ऍक्टिव्हिटी केली जाते त्यावेळेस त्याचं स्वागतच व्हायला पाहिजे आणि मी अशा ऍक्टिव्हिटीचं स्वागत करतो. मला माहिती नांदेड विद्यापीठातलाच गणित विभाग एकंदरीत म्हणजे नॉट ओनली इन युनिव्हर्सिटी बट ऑल्सो इन अफिलिएटेड कॉलेजेस, हा सगळाच विभाग हा अगदीच नेहमीच तत्पर असतो अशा सगळ्या प्रोग्रामसाठी. कारण मला नांदेड विद्यापीठात जवळपास 20 वर्ष 18 ते 19 वर्ष काम करायची संधी मिळाली आणि मला सगळ्यांना म्हणजे असं जवळून माहिती आहे की प्रत्येक महाविद्यालयातला एक तरी मॅथमॅटिक्सचा टीचर, तशा बऱ्याच महाविद्यालयात एकच मॅथमॅटिक्सचे टीचर आहेत, परंतु त्या प्रत्येक डिपार्टमेंटचा प्रत्येक टीचर हा फार ऍक्टिव्ह आहे याची मला स्वतःला प्रचिती आहे. आणि कायमच प्रत्येक डिपार्टमेंट हे अतिशय चांगल्या अशा ऍक्टिव्हिटीज करत असतं. त्याचाच एक भाग आज सतीश चव्हाणनी पुढे आणलेला आहे. त्याला या कार्यक्रमासाठी, या लेक्चर सिरीजसाठी मी शुभेच्छा देतो. मी जेव्हा पाहिलं आपले लेक्चर्स, ऑल आर एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट असं म्हणतो आपण, म्हणजे मराठीतून आपण आम्हाला म्हणायचं तर बाप लोक आपण सगळे बोलवलेला आहात. जसं की अल्जेब्रामध्ये सर घेतलाय स्वतः डी पवार सर आहेत, अनालिसिस मध्ये आमचे मित्र बोरकर सर आहेत, दारकुंडे सर आहेत, इज अ व्हेरी अगेन इन्थुजियास्टिक टीचर. त्याच्यानंतर मला वाटतंय पुण्याहून सुद्धा आपण सर बोललेत, प्रतुल सर, मी त्यांनाही खूप चांगल्या प्रकारे ऐकत असतो आणि बऱ्याच वेळेस त्यांचे लेक्चर्स खूप चांगले असतात आणि ते ऐकतो आपण सगळे मिळून, आपल्याला माहिती. हैदराबादचे एक सर आहेत आपले, ते पण खूप छान म्हणजे त्यांच्या फील्डमध्ये आहेत. म्हणजे मी असं म्हणेल की आपण जेवढे काही लेक्चर्स बोलवले आहेत त्या प्रत्येक विषयासाठी माझे मित्र आहेत. मापारी सर अमरावतीवरून 2दा-3दा नेट सेट पास झालेले आहेत, आता ते PhD नुकतीच झालेली पण आहेत आणि बऱ्याच लोकांना नेट सेट मध्ये घडवण्यात त्यांचाही वाटा आहे. जसं सायन्स कॉलेज आहे तसंच अमरावतीचं कॉलेज आहे, तसंच आपलं डिपार्टमेंट आहे. विद्यार्थ्यांना अशा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये बरेच विद्यार्थी त्यांचे पास आउट झाले. मला वाटते काल पण जो रिझल्ट लागला जवळपास 14 ते 15 विद्यार्थी मी पाहतोय डी पवार सर आपल्या विद्यापीठाचे आहेत, आपल्या स्कूलचे आहेत. त्याच्याबद्दल आपल्याला खरंच आपलं अभिनंदन. यासोबतच 10 ते 12 मुलं हे सेटनेट मध्ये अमरावतीच्याही कॉलेजच्या आहेत, त्यांचंही मी म्हणजे माझंच अभिनंदन करून घेतो, कारण सध्या मी अमरावतीच्याच महाविद्यालयाचा प्राध्यापक आहे असल्या कारणाने. आणि
मला वाटतं सायन्स कॉलेजची लिस्ट दिसत नाही, परंतु म्हणजे पाहण्यात आली नाही. खात्री आहे मला की त्याही महाविद्यालयाचे माझं जे इन्स्टिट्यूट होतं त्याचेही बरेचसे विद्यार्थी या परीक्षेत पास निश्चितच झालेले असतील. त्याचाही माझ्याकडे आकडा येऊ शकतो. मला एकंदरीत सांगायचं आहे की SRT-MU नांदेड या अंतर्गत अफिलिएटेड कॉलेज असू द्या की विद्यापीठाचा स्कूल असू द्या, हे सगळेच मॅथमॅटिक्सचे लोक अतिशय ऍक्टिव्ह असतात. विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक ठिकाणी कुठला ना कुठला कार्यक्रम घेणारे हे सगळे लोक आहेत आणि त्यामुळेच कदाचित विद्यापीठात या महाविद्यालय म्हणजे आपल्या विषयाचा थोडासा दबदबा निर्माण केलेला आहे. आणि त्याचाच एक परिपाक म्हणून मला वाटतं आपल्या विभागाला SRT-MUच्या गणित विभागाला बेस्ट डिपार्टमेंट म्हणून सुद्धा या वर्षीचा मला वाटतं पुरस्कार मिळालेला आहे. त्याबद्दलही त्यांचं अभिनंदन. कारण मॅथमॅटिक्स डिपार्टमेंटला बेस्ट म्हणजे विभागाचा अवॉर्ड मिळणे एवढी सोपी गोष्ट नाही. कारण प्रॅक्टिकल विषय नाही आहे असा तसा पाहिला तर हा थेरॉटिकल विषय आहे आणि तशा विषयात वेगवेगळ्या क्षेत्रात चांगलं काम करणे ही खूपच मोठी गोष्ट आहे. आणि मॅथमॅटिक्स पर्सन्स त्यांच्या आपल्याला माहिती की सगळेच मॅथमॅटिक्स पर्सन फक्त हार्डवर्क एकदम हार्डवर्कवरच बऱ्याच गोष्टी त्या स्वतः अचीव्ह करत असतात. आणि तशाच प्रकारे हा पुरस्कार सुद्धा विद्यापीठाच्या विभागानं प्राप्त केलेला आहे. त्याच्यासाठीही खूप खूप अभिनंदन त्या विभागाचं. कदाचित तिथं असतो तर प्रत्यक्षात आपलं अभिनंदन करायला मिळालं असतं, मला संधी मिळाली असती. असो, तर सांगायचं ह्याचं की विद्यार्थी जे काही या लेक्चर सिरीजला अटेंड करणार आहेत, जवळपास 7 वेगवेगळे टॉपिक्स निवडलेले आहेत आणि त्या 7 टॉपिक पैकी सगळेच्या सगळे टॉपिक प्रत्येक कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामला येणारे आहेत. सर्व विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की आपल्याकडे जे एक्सपर्ट लोक आहेत ते त्या फील्डमध्ये म्हणजे दादा लोक आहेत विषयाच्या बाबतीत, आपण त्यांचं मार्गदर्शन सर्वच विद्यार्थ्यांनी आवर्जून घ्या आणि याचा तुम्ही फायदा करून घ्या. फक्त नेट सेट पास होणं असंच म्हणत नाही मी, परंतु आपल्याला सगळ्या कन्सेप्ट ज्या आहेत बेसिक कन्सेप्ट त्या जरी म्हणजे परीक्षा जरी पास होणं वेगळी गोष्ट आहे आणि आपल्याला बेसिक कन्सेप्ट अवगत असणं ही वेगळी गोष्ट आहे. जर आपल्याकडे बेसिक कन्सेप्ट असतील त्या चांगल्या असतील आपल्या, तर कुठलाही व्यक्ती नेहमी चमकतो त्या विषयात. त्याच्यामुळे सगळ्या एक्सपर्ट्स कडून आपण आपल्या बेसिक ज्या गोष्टी आहेत त्या माहिती करून घ्या. निश्चितच हे सगळे एक्सपर्ट्स आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी सांगतील. विद्यार्थ्याला भरपूर गेन होईल असे सगळे एक्सपर्ट्स आहेत आणि त्यामुळे मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना विनंती करतो की आपण याचा अवश्य लाभ घ्यावा. माझे मित्र चव्हाण सर आहेत, ते तर नेहमीच म्हणजे प्राचार्य चव्हाण सर म्हणतो मी, नेहमीच त्यांच्या महाविद्यालयाला अतिशय चांगले इव्हेंट्स घेत असतात. एक तरुण प्राचार्य, आता ते तरुण नाही राहिले, परंतु एक तरुणपणी प्राचार्य पद स्वीकारलेला प्राचार्य अतिशय चांगल्या प्रकारे त्या ग्रामीण भागातल्या महाविद्यालयाला सुद्धा एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवू शकतो. याचं उदाहरण त्यांनी म्हणजे आपल्या समोर घालून दिलेलं आहे. कारण अशी एकही UGCची स्कीम नाही मला असं वाटतंय की जे त्यांच्या महाविद्यालयात नाही. जवळपास 99% स्कीम्स स्वतः ते बऱ्याच वेळेस मी पाहिले तिथे असताना की स्वतः दिल्लीला जाऊन सुद्धा ते घेऊन स्कीम म्हणजे मंजूर करून त्याचा सगळा पाठपुरावा करून ते आणत असतात. त्यामुळेच खरं तर त्या महाविद्यालयाचं खूप चांगल्या प्रकारे नाव झाले आणि प्रत्येक प्राचार्याला किंवा स्टाफला त्यांच्या मॅनेजमेंटनं जो सपोर्ट केला पाहिजे तशी सपोर्ट करणारी मॅनेजमेंट त्यांची आहे. म्हणूनच कदाचित हे सगळे लोक तेवढ्या पुढे जाऊ शकतात. मी किनाळकर साहेबांना सुद्धा धन्यवाद देईल, शुभेच्छा देईल किंवा चांगल्या प्रकारचे असे कार्यक्रम आपल्या महाविद्यालयात याचाच एक भाग आपण आज घेत आहात. तर मला या कार्यक्रमाला माझ्या विद्यार्थ्यांनी जे बोलवलं त्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि मला माझ्या जुन्या आठवणी जागृत करण्याची संधी मिळाली त्याच्याबद्दल जास्तीत जास्त आणखीन आभार व्यक्त करतो. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू ऑल आणि सगळ्यांना शुभेच्छा मला या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने. थँक्यू. Thank you, Bondar sir, for your unending praise for the teaching fraternity of the mathematics in the university and out of the university, and all your appreciation
of our management and all the teachers. And I particularly what I like in your speech, sir, that instead of currently being a joint director in higher education Pune, you called yourself a professor of Amravati University. This shows the dedication of mathematicians to their subject, and so their students are excelling. Thank you very much, sir. Now, may I request the other guest of honor, Dr. Didi Pawar, sir, Chairman, Board of Studies in Mathematics, Swami Ramanand Tirth Marathwada University, Nanded, to please express his views on this organization. Good evening, one and all. Respected Honorable Madhavji Kinarkar, sir, President of this institution, my friend, Principal Dr. Chavan, Sunanda Mori, ma'am, Director, YCMU, Joint Director, our friend Kiran Kumar Bondar, sir, and respected LM Wagmare, sir, inaugurator of this function. Just now, Sunanda Mori, ma'am, talk about, given the detailed deliberation about the syllabus and e-content development, all those things. And I am happy to say that I am also with a part of that development of syllabus and e-content of Open University for the PG student. Also, madam, I am happy to inform you that as a chairman of this Board of Studies, as well as the director of School of Mathematical Sciences, from past 5 to 6 years, every year, at least 25 to 30 students were passed in different kinds of NET, SET, GATE kind of examinations, as well as many students participated in different national level summer programs in all India level selection based. They were selected and participated in this different kinds of programs also. Just now, Dr. Bondar sir discussed about the results and all those things. And I'm happy that we are in remote area, but we are compete with the department. Those are in Pune University, or those are in Kolhapur University at different places. Means our Nanded University having the very good role in the development of mathematics. Also, as far as this program is concerned, from past some years, I am affiliated with this institute, Hindu Mahavidyalaya Bhokar, and I have observed that within some years, this college organized so many different national level programs, and I hope within some days they will organize some international events on offline mode. I'm not talking about online mode. They have already organized some online international events also. And definitely, I hope and I believe that the team of Professor Principal Chavan sir is definitely organize such kind of events and will be successful event for this university also. And also, I am happy with the part of second event because in the last event, we have collaboratively organized 1 week workshop for the BSc student on their practicals. And we have received very huge response, more than I think 1200 students participated in that event, because during this COVID pandemic situation, we have observed that it is very difficult for the student as well as for the teachers also to in the process of teaching and learning. But in that last event, we have observed that students very much interested to attend all those computer-based event. And they were participated, they were very happy. Also to teachers from our university also very happy with that workshop. And this workshop, definitely, this workshop will be beneficial for the student of Open University. Also, those who have participated from our university, they will also get some benefit, because I have observed that different topics will be teach with different faculties from different areas of the Maharashtra as well as
other state also. Means not all the speaker from the same region. Because some of the teacher from Pune University, Jalgaon University, Amravati University, Nanded University, Kolhapur University, Hyderabad, means this is the good sign of collaborative work of the subject. So I wish best of luck, and because of the time constraint, I think time is already over. After 6 o'clock, there will be the next lecture. So within this period, I stop here. And I also congratulate coordinator, young and dynamic, Dr. Satish Chavan. He is very much interested to organize such kind of workshop training programs. So I also wish best of luck to him also. So thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir, for your well wishes and for your constant support to Dr. Satish Chavan and the institution. Mute kara. Sagade participants, please. Now, we are in the concluding session of the inaugural function. May I request the president of this inaugural function, the president of our institution, Honorable Dr. Madhuraji Patil Kinarkar, to cast his presidential address. Namaskar. At the onset, on occasion of the 75th Azadi Ka Amrit Mahotsav, 1 week national level lecture series on mathematics, organized by the Department of the Mathematics of our institution, IQAC, and the YCMOU Study Center. In the inaugural function, we are right now concluding the inaugural function of this 1 week national level lecture series. The chief inaugurator, Honorable Dr. Uddhavji Bhosle, the Vice Chancellor of the SRTM University Nanded, who has officially asked Mr. L.M. Wagmare, Dean Faculty of Science, SRTM University, to inaugurate this lecture series. I'm thankful to him also. The chief guest, Dr. Sunanda More Madam, who is director of School of Architecture, Science and Technology, YCMOU, Nashik. She has given a good chief guest lecture on occasion of this national level lecture series. Dr. L.M. Wagmare also, as well as the Dr. K.L. Bonda, Joint Director of the Higher Education Pune, who also participated as a guest of honor, and he has put his views on the occasion, as well as the Dr. D.D. Pawar, Chairman of the Board of Studies in the Mathematics SRTMU Nanded. The chief organizer of this function, Dr. Punjabji Chavan, who is the principal of our college too. The main convener, Dr. S.B. Chavan, who is the assistant professor and the head of the Department of the Mathematics. Our co-convener, Dr. A.B. Chavan, IQAC coordinator, who always take the initiative in the arranging such type of functions. And organizing secretary, Mr. Prashant Ake, who is anchoring this function right now. And the other joint organizing secretary, Dr. R.A. Hoge, who is the center convener of the YCMOU Study Center of our college. For last near about 1 hour, we are in the inaugural actually function of this 1 week national level lecture series of mathematics. Since from 1st of this February to near about the 7th of this month, all various lectures have been arranged so far in this lecture series. Dr. Nitin Darkunde is going to throw the light on the group theory
Dr. Rahul Mapari is going to talk about the real analysis. Dr. D.D. Pawar, who is going to throw the light on the linear algebra. The other topic is the topology by Dr. Praful Gadakkar, Dr. Haribahul Lakshman Tidke, the ordinary differential equations, Mohan Chintamani, abstract algebra, who is to talk on that, Dr. V.C. Borkar, the compactness and the connectedness is the topic, who is to deliver lecture on that topic. Dr. Satish Chavan, who is to talk on the numerical analysis. These are the various 8 topics which are going to be discussed in the coming 1 week of this lecture series. And the various chairpersons who are going to be there for these all these functions are the R.N. Ingole, Varsha Borgaonkar, Dr. B.D. Kanade, S.M. Jogdand, Dr. Mr. Veda Prakash Kalyan, and Dr. R.G. Medkar, Dr. S.S. Bellare, N.S. Jadhav, who are all from the all various, either they are the head of the mathematics or the various lecturers in the various colleges in so far as in Marathwada is concerned. That is from Latur, Palam, as well as the Parbhani, Loha, Udgir, and Basmat. This is the function which has been arranged on the occasion of our Diamond Jubilee celebrations. Our nation is celebrating throughout this year. Our Honorable Prime Minister has appealed to celebrate this 75th year of our Azadi as a sort of to take the initiative in all walks of the life. And we, especially in education field, should celebrate its Azadi, or rather the independence celebration of the 75th celebration in such an innovative way that the importance of the freedom, the way we should take the advantage of this freedom to impart the education to all the students, so that the futuristic citizens would be so well educated in all subjects. So that that is the main function of all the universities as well as our colleges, which are imparting the education throughout the state as well as in the nation. To respect that appeal, our college has taken the initiative to arrange the 1 week national level lecture series. She also contributed her views as a director for the School of Architecture, Science and the Technology, YCMOU Nashik, how they have started doing taking all possible new initiatives to impart the education to the students, because we all are facing the pandemic situation so far. Even today also the pandemic situation is not yet over. The third wave of the COVID is already there, and still we are facing many problems in all fields or all the walks of the life. Especially in education field, the colleges are yet not been open. Education is not been started regular basis, and offline education is not there. So for last 2 years, the most suffering the education is the only mostly suffer, and the students have faced so many problems in learning process, as well as the teachers also have faced so many rather teaching problems to the students. But the thing cannot stop here. In spite of all the hurdles we are facing, we all, even the universities and the college level, the lecturers, the principals and the students, we all are facing these problems in education field. I have taken colleges are taking many for newer and newer initiatives to
crossover or the to shoulder on the responsibility to impart the education in a different ways. So that is the one way that the this internet has given us a boom. Rather, this technology has rather helped us to continue the ongoing education process in one way or the other. So this is the way we have started participating in the COVID situation also for last near about 1 year. I'm seeing that our college has taken so many initiatives in arranging the lot many national as well as the international webinars on different subjects by the different departments also. I should appreciate my college lecturers and my principal and all other lecturers who are taking initiative in arranging such programs from the different faculties. And I have already I appreciated their so-called efforts, but they have taken so many seminars rather. The 7 seminars who have been arranged by our science faculty. And I remember the use of math lab in mathematics was the one of the subject for which the webinar has been arranged, and there was a huge support received near about the more than 600 students. Right now also in this lecture series, students have registered their participation, and I appreciate that this new mode of education in rather is people are now started accepting. Students have accepted this new mode of learning process to overcome the COVID situation and to continue their education process. They are, I should appreciate their participation too. The National Mathematics International Webinars lecture series so far have been organized at our college in association with the different educational institutions. I should appreciate our Vice Chancellor's effort also, our university, university also. They have given moral boosting to our college and principal and our lecturers to take initiative in such organizing such a type of the seminars or the webinars or I would say the national level lecture series and all that in mathematics. Our YCMU Study Center and IQAC center of our college has really taken the initiative in such type of functions to arrange it. I am very much hopeful, and I think that the students will be largely benefit with this newer and different topics, because in higher education, it is the what is more needed. It is the only the guidance which is more required. The study material, university and the other colleges or other universities need to provide this all the material available, the library facilities and all the things, or e-content what you say right now, which is more and more if it has been made available, and then the students would be able to learn in a distant way rather in such situation. So the initiative has already been put on by the various universities, which I should appreciate YCMU, as the Dr. Sunanda More Madam in her chief guest address has said that the what initiative she has taken, she and her university has taken to develop the curriculum, the syllabus, and to use the internet services and all that part from the admission level to the examination level, and to impart the education also. And they are already on mode to devise newer and newer innovations in imparting the education in a very effective way rather. And I'm really thankful to our principal as well as the
all the lecturers, especially Mr. A.B. Chavan, co-convener of this IQAC coordinator, and Dr. S.B. Chavan, who is a young, dynamic, our assistant professor, head of the Department of the Mathematics, who has all the time taking all the initiative in the taking a newer steps in his department as a mathematics. Their conjoined effort have earned the name of our institution in our university area, and I definitely again looking forward that the more and more new initiative and more education devices would be rather processed from our college side. We will definitely, our management is going to support them in a happily to give them all possible support to impart the education to the students spread all over the state as well as in India. With this new system and with this new lecture series on the internet and all that, we are making available the resource persons of the various subjects to reach these people. Even if this COVID situation would have not been there, because one day or the other the COVID situation is going to end. But the thing is that the internet and this newer technology is going to help to provide new and newer all other resource persons in the subjects throughout the India as well as the national and international level, so that they would be made available with this sort of a lecture series, and the education will be highly qualitative, and the students so far will get more and more knowledge, and they would be more resourceful person for the nation to serve. So I am very much thankful for taking all this initiative, and I am very much thankful to all these dignitaries who are present over here for this. They have spared their valuable time to boost up the moral of our principal as well as all the lecturers, and the initiative taken by our YCMU study center of ours, IQAC, and the Department of the Mathematics. Without their guidance, without their support, and without their valuable time, and this would have not been possible. I expect such to continue their support and blessings to our institutes, our lecturers, our principal, and the students so far who are participating and would be participating in such type of our initiatives. I'm thankful to Dr. Wagmare, who has inaugurated on behalf of the Mr. Dr. Bhosle this lecture series. I'm thankful to the chief guest, Krishnanda Moreji, who has thrown the light on the initiative taken by the YCA Nashik. KL Banda has joined, although he's a joint director of higher education, he has addressed so nicely. So rather a Midas touch has given to this function, because he spoke in Marathi, in mother tongue language, as well as the his heart towards our university as well as the Amravati. He has spoken of, and so many resources, they are well known to him. And on the contrary, Mr. Satish SB Chavan, his student also, he has remembered it. And I'm thankful, Mr. KL Mondar sir, because you have produced such a nice students, and he is working there in our education, our institute. I'm thankful to Dr. D.D. Pawar also. He has also thrown the light on the whatever the initiative our university is taking, our board of studies, how he has arranged the syllabus of the postgraduate of this distant education of ICMU Nashik courses. I'm thankful to each and every person who has taken pains to organize this 7 days lecture series. I'm thankful to the resource persons who are going to deliver their lectures on the various topics, and the chairpersons who are going to attend the functions. So at the last,
I would say thanks. I would give my best wishes to their initiative, and I expect them to continue such type of the initiative in future too. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir. It is the constant encouragement by your side that makes it easy for the faculties to flourish in their respective fields. I would like to assure you that on the behalf of the organizers that we will carry forward these types of initiatives even after the end of COVID situation. And now, moving forward, may I request Dr. Arvind Chauhan sir, the coordinator of IQC and the co-convener of this lecture series, to please cast the vote of thanks for this inaugural function. Dr. Arvind Chauhan sir. Thank you, sir. Am I audible? Yes. The grace and good evening to our sir. Okay. The grace and good evening to our most valued guest, our resource person, inaugurator, worthy teacher, our management committee, and most beloved student. Dear friend, it's my privilege to have asked to propose a vote of thanks on the occasion of this 75th Azadi Ka Amrit Mahotsav 1 week national level lecture series on mathematics. I, on behalf of the Department of Mathematics, IQC and YCMO of Digambara Bindu College, Bhokar, and the entire fraternity of our institution, the first of all, extend my most sincere thanks to the Lord Saraswati. On behalf of I extend a very hearty vote of thanks to our inaugurator, Honorable Vice Chancellor of this University, Dr. Udarraoji Bhosle sir, for accepting our invitation. But due to the official meeting, sir has been unavailable to us. I express my heartily thanks to Honorable Dr. L.M. Wagmare sir, Dean Faculty of Science and Technology, SRTM University, Nanded, who on time accept our invitation as a inaugurator for this event and inaugurated this event, and who spared time from his busy schedule to grace this occasion. Dear friend, I also extend my greeting towards the chief guest of this function, Dr. Sunanda More Madam, Director, School of Architecture, Science and Technology, Yashwantrao Chauhan, Open University, Nashik, for her thought-provoking, interesting address to our students and delegates. I also extend my greeting and thanks to our guest of honor, Dr. K.L. Bondar sir, Joint Director of Higher Education, Pune, for his guidance and moral support. I also extend my greetings of thanks to our another guest of honor, Dr. D.D. Pawar sir, who is Vice Chairman and Director, the School of Mathematics, SRTM University, Nanded, for his minute-to-minute support and guidance for encouraging and at every point of time in the organizing this great event. Dear friend, I also thanks to our proactive principal, caring principal sir, Dr. Punjab Chauhan sir, for his continuous support and backing at every moment of organizing such an event in the institution. I also would like to be in depth of our beloved president of Digambara Bindu Smarak Samiti, Honorable Dr. Madhav Patil Kinakar sir, the former Minister of Government of Maharashtra, for their continuous support and backing at every moment for organizing such kind of event. I also thanks to the convener, Dr. S.B. Chauhan, for organizing such an innovative lecture series by gathering the great mathematicians from the Maharashtra and all over India, and it will be available for the students in open access.
सर तुम्ही म्यूट झालात चव्हाण सर. सर म्यूट झाला सर तुम्ही. सर म्यूट आहेत तुम्ही. हॅलो सर, आवाज म्यूट झाला. हॅलो सर, म्यूट झालं सर. सर आवाज येत नाही. सर हॅलो म्यूट सर. आहात तुम्ही. हॅलो सर. हॅलो सर. सर अनम्यूट कर, आवाज येत नाहीये. अरविंद सर. सर त्यांना कॉल करा वाटलं. Okay, Prashant, you conclude. आवाज येत नाही. येते सर, आता आला. एक सर 2-3 मिनिटांसाठी बंद झाला. Finally, I thanks to. Sorry, sir. You have already completed. Thanks for everyone. Thank for everyone. Yes, You conclude. Once again, I thanks for all your coordinate cooperation and thanks to the everyone. And session is over to Mr. Prashant. I really apologize because we are sitting in the same room, but I have muted my speaker, so I was unable to hear, and there was no clue that he was inaudible. Anyway, thank you everyone, and I request all the participants, teachers, students to please stay tuned. We will start the first session right now. Within 2 minutes. There is a slight change in the plan of the session. The first session was to be delivered by Dr. Darkunde, but he is engaged in some other official assignment. So today's session will be conducted by Dr. Rahul Mapari sir. He will deliver his expert lecture on real analysis. Very soon, Mapari sir will start his session. Mapari sir, Yes, you sir. ready? Yes, I am ready. Okay, over to you, Mapari sir. Students, please stay tuned. Hello. The session is starting right now. सर ओके सर. Yes. ओके सर. Yes. डॉक्टर इंग्लिश सर आहेत चेअरमन. इंग्लिश सरला पण कॉल करा. सरांच्या नंतर. हॅलो. Hello. हॅलो इंग्लिश सर. हा बोला सुरू करायचं का? स्टार्ट कर. हा सेशन स्टार्ट करायचं का? Yes sir. First of all, Just a minute, sir. Just a minute, sir. English, sir, wait a moment. Sir will announce the. Okay, sir. English, sir, please start. Okay, sir. Okay. First of all, I congratulate and very thankful to Dr. Punjab Chavan sir, Chief Organizer, Dr. Satish Chavan sir, HOD Mathematics, and AB Chavan sir, IQSC Coordinator. That means in mathematics, Chavan Cube, C Cube is very active in our university of Digambara Bindu College, Bhokar. So this is very big on the occasion of 75th Azadi Ka Amrit Mahotsav. So very big 1 week national level lecture series on mathematics. So today's first lecture. So I am happy because give a chance of first lecture, chairperson. So first lecture is Dr. Rahul Mapari, my friend. So his topic is real analysis. So I request to Dr. Rahul Mapari sir to start your lecture. So very best topic, real analysis. Okay, sir. Okay. Thank you.
Thank you, sir. Starts. So thank you, organizer, for giving me opportunity. The topic of my talk is real analysis. I just try to cover some basic and fundamental concepts of real analysis, like limit, continuity, differentiability, or you can say limit point of a set, of a sequence, and then what is limit of a sequence, because these are these are different concepts. But most of the students confused in the basic concept, and that's why they will not that means they will not prepare, they cannot prepare the advanced concept of the analysis, and that's why I choose this concept, this topic, the basic concepts of analysis. So माझा व्हिडिओ जर दिसत नसेल तर त्या व्हिडिओला पिन करा, म्हणजे स्क्रीन शेअर करायचं काम नाहीये, बस व्हिडिओला पिन जरी केलं तरी पूर्ण म्हणजे व्हिडिओ दिसून जाईल तुम्हाला. ओके, क्लियर आहे स्क्रीन आणि आवाज क्लियर आहे? Yes, yes, clear is that I can start. Now the real analysis, I will try to cover some basic points like limit. So for the limit, continuity and differentiability, I'm not going to talk on the epsilon delta definition. I'm talking about the simple or fundamental concept that how we can check the limit, continuity and differentiability of some particular function graphically. Rahul sir, Clear disat nahi. Apologies to disturb you, sir, but your screen is not clear, sir. बोर्डवर थोडं दिसत नाही क्लिअर. बोर्डवर बोर्ड सर बॅकग्राऊंड तुमचा आहे ना तो हे दिसतंय, बरोबर दिसतंय, क्लिअर नाही. थोडं मोठं करा, थोडं मापारी सर त्याला. नाही सर, मोठं ते व्हिज्युअल फाट हे झालं सर, पिक्सेल फाटत आहेत सर ते. हो सर, ते जे व्हिज्युअल बॅकग्राऊंड आहे ना ते नॉर्मल करून टाका. नॉर्मल करा सर. ओके ओके. थोडा कलर चेंज केला तरी दिसेल वाटायला. हा सर, म्हणजे जसं दिसत असेल मला सांगा, मी तसं करतो. थोडा रेड करता का, थोडा त्याला व्हाईटच्या ऐवजी रेड केला तर दिसेल असं मला वाटतं. ब्लॅक ब्लॅक सर, डार्क ब्लॅक. हो, ब्लॅक न दिसेल. ओके ओके, ठीक आहे सर, एका सेकंड. ब्लॅक करू सर, ब्लॅक. हा, ब्लॅक करा, ब्लॅक करा. नाही सर, स्क्रीन हे राहू द्या सर, ग्रीन राहू द्या स्क्रीन, फक्त ते वर्ड म्हणजे ते ब्लॅक करा. ते व्हाईट जे आहे ते अक्षर ते ब्लॅक करून पहा. ब्लॅक दिसेल नाही सर त्याच्यावर, म्हणजे ग्रीन वर ब्लॅक दिसणार नाही व्यवस्थित. व्हाईट अँड ब्लॅक घ्या सर. रेड घ्या सर, पेन रेड घ्या. पेन रेड घ्या किंवा मग बॅकग्राऊंड व्हाईट घ्या सर. बॅकग्राऊंड व्हाईट घेतो सर, ठीक आहे. राईट राईट सर. हा, आता त्याच्यावर तुम्ही थोडस येलो घ्या किंवा रेड घ्या. हो सर. ब्ल्यू पेन घ्या सर. ब्ल्यू पेन ब्ल्यू पेन चांगली राहील.
बर चालेल नाही चालणार ब्लॅक ब्लॅक अँड व्हाईट चालते. व्हाईट आहे आता ब्लॅक करून दिसत. Black. नाही. ब्लॅक घेऊ सर ब्लॅक. हा ब्लॅक घेऊ का? ब्लॅक घ्या. ओके Black आहे black. येते सर. नाही सर सर clear नाही सर. थोडा फॉन्ट मोठा पाहिजे. दिसत नाही सर. बरं बरं ठीक. चालते ओरली चालू द्या सर. हो हो सर नाही तर स्क्रीन शेअर करता आले तर बघा ना सर. नंतर क्वेश्चन आन्सर मध्ये काही डिफिकल्टी विचारतील. ओरली चालते. हो हो चालेल सर. Now it is visible, sir. हा It is visible, sir, now. ओके हा थोडा फॉन्ट मोठा घेतल्यानंतर दिसत आहे. बर ओके सर चालेल. ठीक आहे मी थोडं मोठ्या अक्षरात लिहितो काही प्रॉब्लेम. हा चालू द्या. So I'm talking about the fundamental concept of analysis, and that is we will going to check limit, continuity, and differentiability of a function, of a particular function, by graphical approach. I'm not talking about the epsilon delta definition here, but limit, continuity, and differentiability by graphical approach. ओके जर दिसायला प्रॉब्लेम असेल तरी मी हेच करतो म्हणजे तुम्हाला सर ओरली एक्सप्लेन केलं तरी चालतं. हो ओके सर. सो ओके हे दिसत आहे सर्वांना आता. हो सर. Yes. Okay. Now first of all when we talk about the graphical approach for the limit, continuity, differentiability, we should know some graphs of elementary functions, some graphs of the basic functions like x square, x cube, right? So x to the power n in general, and whenever n is even or odd, at that time the graph looks like this side, your left side, I think. So if we choose x to the power n and where n is even, then graph is a parabola, this first graph. And when we choose n as an odd number, then graphs look like this, x cube or x to the power 5. So this, I just show the basic graphs of our graphs of elementary function first of all, and then we will work on it for the limit, continuity, and differentiability. Okay, and obviously you should know about the function. So function is what from one set to another set, right? Suppose f is from s to r, where r is set of real number and s is a subset of set of real number, and then order pair x f of x, or we can say xy, is called the graph of y equals to f of x function. So this is a very simple graph जो सभी को पता होता है, right? So even or odd, ये सिर्फ ध्यान में रखें, ठीक है? Then next one is exponential function, graph of exponential function. That when we say e power x, or when we say exponential function, हमारे दिमाग में एकदम पटाख से आ जाता है कि e power x, right? But e power x is one of the particular case of exponential function. So in general, exponential function is what? A power x, where a is some constant real number, obviously positive real number. We are talking about the real analysis. So a is a positive real number and x is a variable, right? So a power x is an exponential function. Now the graph of that exponential function is depend on the value or range of the constant, that a, range of the a. So whenever a is greater than 1, you can see here, whenever a is greater than 1, this graph is in increasing mode, or we can say the function is increasing, and that's why graph looks like a increasing graph. And whenever a is in between 0 to 1, because this a is positive, so we have to choose the range of a from 0 to plus infinity, right? And so if a is greater than 1, graph is increasing or function is increasing, and when a is in between 0 to 1,
we cannot take here 0, because when we take 0 to the power x, so 0 to the power any real number is 1 except 0, right? Except 0. And we don't need to take 1, because 1 power any real number, again 1, right? So that's why we take here the open interval 0, 1. So the range of a is in open interval 0, 1, and at that time the graph of exponential function is decreasing. So here I take example of e power x, suppose, in the first case, and in the second case we take 1 by e power x, 1 by e power x, because 1 by e is less than 1, or we can say in between 0 to 1, and e is greater than 1. Okay, so this is about the exponential function. So general form of exponential function. Okay, now third graph is of logarithmic function. Logarithmic function, we have taken here the base a, and again the restriction or constraint on a are the same, like an exponential function, right? So a greater than 0, obviously, then a we cannot take 1, and here we have to enforce the constraint on x also, because logarithmic function is defined only for positive real number. It is not defined at 0 and not for negative real number. And so the a is greater than 0. So obviously we have to take two cases for a. One is a greater than 1. Second one is in the interval 0 to 1, and a not equals to 1. And x is greater than 0 because of logarithmic function is not defined at 0 or negative real number. Now when a greater than 1, the graph is increasing again. This one graph is increasing, and whenever a is in between 0 to 1, open interval 0 to 1, and that time graph is decreasing. Graph is decreasing. Now say from the graph we can say here there is one very important question which is asked in IIT JAM exam or any CSIR NET or SET GATE exam, that the inverse of increasing function is, and there are 4 options. Suppose the statement is inverse of increasing function is, and there are 4 options: decreasing function, increasing function, neither increasing nor decreasing, or either increasing or decreasing, like this, right? But when we talk about the inverse, हम पहले से दिमाग में ये लेके चलते हैं कि भाई inverse मतलब उल्टा, inverse मतलब उल्टा. So the statement is the inverse of increasing function is, और ऑप्शन में अगर किसी ने कुछ पढ़ा नहीं या कंसेप्ट नहीं पता तो वो डिक्रीजिंग लगा देगा, बिकॉज वो माइंड में एक माइंड सेट रहता है कि उल्टा, इनवर्स मतलब उल्टा. बट हियर वी must have to observe this a power x whenever a greater than 1, this is first case, right, for the exponential function, and logarithmic function for the same case of a, the value of a greater than 1. Here the exponential function for a greater than 1 increasing, and here logarithmic function, which is the inverse of exponential function, for a greater than 1, it is also increasing. It is also increasing. So the inverse of increasing function we get here increasing function and not decreasing. Okay. So, and second one is same. The whenever range of a is 0 to 1, and then that time function is decreasing. So in same interval, logarithmic function also decreasing function. So the inverse of decreasing function is decreasing, and inverse of increasing function is increasing here, right? So उल्टा जो हम सोचते हैं वो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है ना. बट फिलहाल तो हमें जो एलिमेंट्री फंक्शन के ग्राफ देख रहे हैं, राइट. पहला हो गया x पावर n odd even. Okay, then next one is exponential function, and it has constraint that on the value of a obviously positive, and there are 2 ranges, right? Same for logarithmic function. Again we have 2 ranges for the base a. Then fourth one is trigonometric function, from which I have taken here sin x, because these are the very basic function in the analysis. We can say elementary function. Sin x, we should know the graph of sin x function. So this curve, oscillating curve, right, and it passes through 0 at the point 0, right? And next function is cos x function, right? Trigonometric, sine and cos.
So cos function does not pass through 0. At 0, the value of cos x is 1, right? So this second curve is for cos x and this first curve is for sin x, the graph of sin x and cos x. And then next curve is a straight line, right? Position may be different, but mx plus c, f of x equals to mx plus c is a straight line. Okay, so sin x, cos x, exponential, logarithmic, x power n, and this is straight line. So these are the graphs of elementary function. Okay, now next, अभी जैसे ही हमें बेसिक कुछ फंक्शन के ग्राफ पता है, now I can define limit, continuity and differentiability by taking the help of graph or the behavior of that graph, right? So limit, if you think mathematics is a temple, then limit is the god of that temple. लिमिट के सिवा कुछ नहीं होगा. कोई भी कंसेप्ट आप कहीं पे भी आगे जाइए एनालिसिस में, लिमिट ही सबका बेस है, एंड दैट्स व्हाई मुझे ये लगता है कि लिमिट सारे बच्चे जिसके भी सिलेबस में वो टॉपिक आया, वो अगर लिमिट को क्लियर कर पाता है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर कर पाएगा, राइट? नाउ दिस is a limit, and limit is what, when obviously a simple definition is whenever LHL, that means left hand limit and right hand limit, both are suppose exist, and if they are equal, then we say limit of that function exists, but limit of that function exists at a particular point. Limit, continuity and differentiability, ध्यान से सुना है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ऑल दीज आर पॉइंट प्रॉपर्टी. हम किसी भी पूरे डोमेन में एकदम से ये नहीं बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है उस डोमेन पे टोटल. जब भी लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी की बात होती है, ये होती है पॉइंट प्रॉपर्टी. आप एक पॉइंट पे बताओ, हाँ सारे के सारे पॉइंट पे, मतलब एक डोमेन है कोई, है ना, एक रियल सेट ऑफ रियल नंबर है या उसका सबसेट है, अगर हर पॉइंट पे वो फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट होता है, कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल होता है, मतलब कोई भी कंसेप्ट कंटिन्यूस होता है सब, तो आप बोल दो कि आर पे कंटिन्यूस है, बट आपने उसके पहले फंडामेंटल जान दीजिए कि आपने हर पॉइंट पे चेक किया उसको, और फिर आपको हर पॉइंट पे वो मिला कि भाई कंटिन्यूस है, एंड दैट्स व्हाई यू से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ डोमेन. और थोड़ा आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट कीजिए जो भी है, ठीक है? ओके, अभी भी नहीं दिख रहा है बराबर कुछ कम? Yes, sir. दिख रहा है सभी को? Yes, sir. ठीक है. और मतलब हम बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस तो यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं ना, कि भाई मैं बहुत ही कुछ अलग बताऊंगा या बहुत ही कुछ ज्यादा बताऊंगा, बिल्कुल नहीं. हमें तो बस बेसिक जो चीज है, बस हमें तो ये लगता है कि आधे एक घंटे में जो भी हमें टाइम मिला है, उस टाइम में आपको कम से कम जो बहुत ही बेसिक सी चीज है वो आपको बता पाए, ठीक है ना? सो लिमिट इज व्हाट, LHL इक्वल्स टू RHL. ऑब्वियसली ये दोनों फाइनाइट होने चाहिए, राइट? एंड देन वी से द लिमिट ऑफ फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज एग्जिस्ट, है ना? एक इन्फिनिटी है, या फिर जैसे LHL मुझे -1 मिला और RHL मुझे 1 मिला, नॉट इक्वल, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा. बट मुझे यहाँ पे भी 1 मिलता है और इस साइड में भी, मतलब LHL और RHL दोनों 1 ही मिलते हैं, देन ऐसे लिमिट एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट दैट x इक्वल्स टू a सपोज. और इसीलिए आपने कोई भी बुक पढ़ो, आपको यही दिखेगा कि एट x इक्वल्स टू a या एट x इक्वल्स टू x0, इसी तरह से लिखा है. क्यों पूरे डोमेन पे नहीं बोला है ना? तो एक एक पॉइंट पे चेक करने के बाद हम वो क्लियर होते हैं कि यस, इसके सेट के सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा या लिमिट एग्जिस्ट होगा, एंड दैट्स व्हाई वी से लिमिट एग्जिस्ट और कंटिन्यूअस दिस फंक्शन. तो ये तो चीज हो गई बेसिक एक लिमिट की, है ना? अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये लिमिट होता क्या है एक्चुअली, मैं ये छोटी सी स्पेस में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? एक ग्राफ है सपोज, इस तरह से f ऑफ x का ग्राफ है, और मुझे इस पॉइंट पे a है, x इक्वल्स टू a, इस पॉइंट पे लिमिट चेक करना है. तो ये ध्यान रखना, जब भी हम रियल एनालिसिस में हैं,
कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जब जाते हैं हम, तो लिमिट की कंसेप्ट बहुत अलग होती है। इस तरह की कंसेप्ट, रियल एनालिसिस की कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स में मतलब क्या कहेंगे, वैलिड ही नहीं है रियल एनालिसिस की कंसेप्ट, बिकॉज द प्रॉब्लम इज, जब भी आप सपोज इस पॉइंट पे लिमिट किसी फंक्शन का चेक करते हैं, ये ग्राफ मैंने यहाँ पे कर्व ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए पॉइंट है, अब मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, मतलब क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है मतलब क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है मतलब एक्स मैं अप्रोच करूंगा ए के पास, बट फ्रॉम लेफ्ट, और इसीलिए हम ऐसा देते हैं ना, ए पे ऐसा निगेटिव साइन, राइट? इट डजंट मीन निगेटिव माइनस ए, इट मींस एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम लेफ्ट। क्योंकि रियल एनालिसिस में सोचो ना, आप कितने वे है किसी पॉइंट को अप्रोच करने के लिए, और ये बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल सी कंसेप्ट है। जैसे ये पॉइंट है, अब इसके पास जो वैरी होगा या कोई भी एक्स सपोज वेरिएबल अप्रोच करेगा, तो कितने डायरेक्शन है या कितने वे है? दो ही वे है, या तो इस तरह से जाएगा या फिर इस तरह से। और इसलिए यहाँ पे जो है हम ए को माइनस लगाते हैं और यहाँ पे ए को हम प्लस लगाते हैं, ये यही साइन है। सो लेफ्ट अप्रोच एंड लेफ्ट साइड अप्रोच एंड राइट साइड अप्रोच, तो दो ही साइड से जाएंगे रियल एनालिसिस में ना, तो कॉम्प्लेक्स में अलग चीज होगी। नाउ अब मैं सपोज लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच होता हूं ए को, तब ये ग्राफ कहां जाता है? जैसे आप मतलब इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, ऐसे करते करते ये अप्रोच, तो ये ग्राफ कहां जा रहा है? सपोज यहाँ पे आ रहा है, उसके साथ साथ पैरेलल, है ना, एंड फ्रॉम राइट ग्राफ इस तरह से आ रहा है, राइट? तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट मुझे दिख रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से एक कोइंसिडेंस मिल गया हमें कि भाई यही वैल्यू दोनों तरफ से आ रही है, राइट? और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, आप सभी लोगों को देखो, x टेंस टू ये, इसका मीनिंग कभी भी x इक्वल्स टू ये होता ही नहीं। x टेंस टू ये, इसका मीनिंग, जैसे हम पुट वाली कंसेप्ट देखते हैं ना, जैसे आपने पढ़ा होगा 11-12 से कि भाई अगर एक आधा एग्जांपल है, लिमिट x टेंस टू 2 सपोज ऑफ x स्क्वायर, आप लिख देते हैं 2 स्क्वायर दैट इज 4, राइट? ये जो इक्वल्स टू सिंबल है, ये एक्सेप्ट किया हुआ सिंबल है, एक्चुअली यहाँ पे इक्वल्स टू चाहिए ही नहीं। मतलब मेरा तो प्रॉब्लम यही है कितने दिनों से कि यहाँ पे इक्वल्स टू चाहिए ही नहीं, क्योंकि इससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कंसेप्ट में, राइट? तो ये इक्वल्स टू है नहीं एक्चुअली यहाँ पे। ये क्या है भाई? तो ये चीज है, आपका 4 आंसर आएगा, बिल्कुल 4 आंसर ही आएगा, बट इस तरह से नहीं। 4 आंसर कैसे आएगा आपका? जैसे कि आप x टेंस टू 2 बोलेंगे, है ना, और x स्क्वायर है, x टेंस टू 2 बोलेंगे आप, राइट? तो ये जो x स्क्वायर है, जैसे ये लाइन, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूं, ठीक है? यहाँ पे ओके, मैं यहाँ पे अच्छे से समझा पाऊंगा आपको। अभी दिख रहा है ना सभी को मैं जो लिखता हूँ? Yes, ऐसा ना sir. कोई? ओके, अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, हाँ, यस। तो जो लिमिट x टेंस टू 2 है और x स्क्वायर है आपका, इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली जान लो, ठीक है? यहाँ से मैं LHL निकालने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से RHL निकालने की कोशिश करता हूँ, राइट? सो वेन, और अपने पास तो दो ही मार्ग है, दो ही वे है ना, फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट, ये है 2 पॉइंट आपका, राइट? सो मुझे बताइए, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच होता हूँ 2 की तरफ, तो ऑब्वियसली मैं 1.5 से कभी ना कभी जाऊंगा यहाँ से, है ना? मतलब वो तो डोमेन पे डिपेंड करेगा, बट 1.5 से कभी ना कभी जाऊंगा, इस साइड में है तो 1.5 के लिए x स्क्वायर की क्या वैल्यू है? मतलब 1.5 स्क्वायर जो भी होगा, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे यहाँ पे, पर जो भी वैल्यू होगी ये होगी। तो मैं आगे चला जाऊंगा और तो 1.8 से भी आऊंगा कहीं ना कहीं, मतलब हर पॉइंट से आऊंगा, मैं तो रैंडमली कुछ पॉइंट ले रहा हूँ, तो 1.8 का स्क्वायर आएगा, है ना? तो 1.5 का स्क्वायर जो है वो लेस देन होगा 1.8 के स्क्वायर से, मतलब मैं 1.9 से भी जाऊंगा तो फिर 1.9 का स्क्वायर आएगा, मैं 1.99 से भी आऊंगा, मैं 2 पे कभी नहीं आऊंगा। जब भी मैं लिमिट की बात करता हूँ x टेंस टू 2, इट मींस x टेंस टू 2 मींस x नेवर इक्वल्स टू 2, ये बात सिर्फ ध्यान रखना। सो 1.99 से जाऊंगा तो उसका स्क्वायर, 1.9999 इससे जाऊंगा तो उसका स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर होने वाला है ये हो रहा है क्लोज 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 टू 4, एग्जैक्ट 4 कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप एग्जैक्ट 2 कभी नहीं लेंगे। ये होती है लिमिट अप्रोच। फिर से राइट हैंड साइड में क्या होगा भाई? राइट हैंड साइड में जैसे कि आप 2 से बड़ा है ना, तो इस साइड से आएंगे तो 2.5 से अप्रोच होंगे, कभी मतलब अप्रोच होके आएंगे इस साइड में, तो 2.5 का स्क्वायर,
है ना। फिर और 2 के पास जाएंगे तो 2.4 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, है ना। अप्रोच होंगे 2.1 से भी अप्रोच होंगे, 2.01 से भी अप्रोच होंगे, 2.001 से भी अप्रोच होंगे। तो इसके जो मैं स्क्वायर करता हूं ये अप्रोच हो रहे हैं आपके क्लोज टू 4, एंड दैट्स व्हाई LHL क्लोज टू 4 मतलब वो भी 4 की तरफ अप्रोच हो रहा है फंक्शन आपका, और राइट हैंड साइड लिमिट मतलब RHL भी आपका 4 को ही अप्रोच हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी write here the limit x tends to 2 of x square is equals to 4। एक्चुअली ये ऐसा लिखना चाहिए था हर बुक में, बट ठीक है अभी हमने सिंबल एक्सेप्ट किया है, हर बुक में यही है तो हम भी इक्वल्स टू ही बोलेंगे, बट ये एक्चुअली में इक्वल्स नहीं है, ये क्या है अप्रोच टू। whenever x approaches to 2 x square approaches to 4, that is the concept of limit। पुट वाली कंसेप्ट नहीं है ये, ठीक है। तो ये है एक डेफिनेशन लिमिट की, LHL RHL। चलिए एक एग्जांपल हम आपको क्लियरली और दिखा देते एक बार, है ना। एक लिमिट करेंगे, लिमिट निकालेंगे एक फंक्शन का, और बहुत ही डिफिकल्ट फंक्शन का नहीं, एकदम सिंपल फंक्शन वाला लिमिट निकालेंगे, ठीक है। यस, एक फंक्शन लेता हूं मैं f of x इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। सभी को दिख रहा है? Yes, sir. 1/x, हाँ सिंपल। बस ये फंक्शन एक आइडियल फंक्शन मान के चलो आप, यहाँ से आपको लिमिट समझने वाला है, ठीक है। f of x इक्वल्स टू 1/x, और मैं लिमिट चेक करना चाहता हूँ 0 पे, लिमिट चेक करता चाहता हूँ 0 पे, और मेरा फंक्शन है f फ्रॉम r टू r, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब 0 के लेफ्ट साइड वाला भी पोर्शन है और राइट हैंड साइड वाला भी, मतलब यहाँ पे 0 है तो यहाँ इस साइड में निगेटिव नंबर है, इस साइड में पॉजिटिव नंबर है। और 0 को अप्रोच होने के लिए आपको समझ में आया होगा कि 2 ही पाथ है, ये वाला, है ना। तो चलिए बात करते हैं अब लेफ्ट हैंड लिमिट की। पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं इस फंक्शन की। अब इसका लिमिट एग्जिस्ट है कि नहीं वो तो चेक ही करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब आप मुझे बताओ, जब लेफ्ट हैंड साइड मैं लिमिट लेता हूं यहाँ पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच होगा 0 की तरफ, राइट। मतलब अब यहाँ पे -1 है सपोज, तो मैं इसके पहले वाले नंबर नहीं लूंगा यहाँ से, मतलब मुझे 0 की तरफ ही जाना है तो मैं क्लोज ही जाऊंगा डायरेक्ट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे निगेटिव नंबर लेने पड़ेंगे, मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच होता हूँ, ठीक है, निगेटिव नंबर। सो सपोज मैं -1/10 से अप्रोच हुआ कभी ना कभी, तो ये फंक्शन वैल्यू क्या देगा? अगर मैं -1/10 से जाता हूं, है ना, 0 की तरफ जाना है ना मुझे, रास्ता तो एक ही है, लेफ्ट हैंड साइड से एक ही रास्ता, एक ही लाइन है, उस लाइन से चलना पड़ेगा मुझे। तो मैं कभी ना कभी -1/10 से जाऊंगा, और अगर मैं -1/10 से जाऊंगा तो मुझे उस फंक्शन में अगर वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे -10 मिल जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, बराबर है। -1/10 यहाँ पे 1/x है, तो x की जगह पे आप -1/10 रखेंगे, 10 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो -10। लेकिन अगर मैं फिर से -1/100 से भी अप्रोच होऊंगा तो मुझे -100 मिलेगा, राइट। मैं -1/1000 या 1 लाख, जितना भी बड़ा नंबर लीजिए आप, यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हैं, जितना बड़ा नंबर लेंगे उतना 0 के क्लोज जाएंगे, है ना। तो ये इतने बड़े नंबर मिलेगा हमें आउटपुट, बराबर है। अब आप सोचो, यहाँ पे -10 मिला, यहाँ पे -100 मिला, यहाँ पे -1 लाख, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन, जितना भी बड़ा नंबर मिला, इसका मतलब क्या है, ये नंबर अप्रोच हो रहा है -इन्फिनिटी की तरफ। बहुत बड़ा नंबर लेकिन निगेटिव साइन लगा के, बहुत बड़ा नंबर लेकिन निगेटिव साइन लगा के, समझ में आ रही बात? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। अगर मैं वही बात करूं RHL की, राइट हैंड लिमिट, आप देखो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट मतलब यही लाइन, यही 0, इस साइड में मैं अप्रोच होता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं 0 के पास जाऊंगा, 1/10 से अप्रोच होऊंगा तो मुझे 10 वैल्यू मिलेगी, 1/100 से अप्रोच होता हूँ तो मुझे 100 वैल्यू मिलेगी, 1/ बहुत बड़े नंबर से अप्रोच होता हूँ तो उतना बड़ा नंबर मुझे उल्टा करके मिल जाएगा। तो ये नंबर कहाँ अप्रोच हो रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, मतलब जाते जाते कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ, है ना। तो LHL आपको क्या मिला, -इन्फिनिटी, और RHL आपको क्या मिला, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। नॉट इक्वल बोलो, हम तो ये सिंबल भी यूज नहीं कर सकते, नॉट इक्वल वगैरह यहाँ पे, लेकिन ये -इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। दैट्स व्हाई द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन does not exist at x equals to 0, does not exist at x equals to 0। क्लियर है ये चीज, क्लियर है? Yes, sir. यस, Yes, sir. अदरवाइज मैंने तो आपको क्वेश्चन किया ही नहीं। अगर मैं क्वेश्चन करता ना कि 1/x का लिमिट एट x इक्वल टू 0 बताओ क्या है, तो 90%
से ज्यादा स्टूडेंट मुझे आंसर हमेशा इन्फिनिटी देते हैं, बट मैंने वो टाइम की वजह से वो ज्यादा पूछा नहीं आपको, बट इन्फिनिटी आंसर आता है मुझे पता है। बट द लिमिट ऑफ दिस 1/x एट 0, अगर आपका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है तो सिर्फ प्लस इन्फिनिटी नहीं आएगा, LHL आपका माइनस इन्फिनिटी आएगा और RHL आपका प्लस इन्फिनिटी आएगा। हाँ, अगर हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं मतलब अगर मैंने डोमेन लिया R स्टार मतलब नहीं स्टार नहीं, R प्लस यूनियन 0, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0 यही लिया, तो फिर 1/x का लिमिट सिर्फ इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि अब लेफ्ट हैंड साइड से आपको अप्रोच होने के लिए पाथ ही नहीं, आपका डोमेन कितना है, आपका डोमेन यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है और इधर चला जा रहा है, तो आपको निगेटिव पोर्शन है ही नहीं आपके पास, मतलब यहाँ तक आने के लिए। और लिमिट कंसेप्ट इसी पे चलती है कि आपको पाथ चाहिए वहां पे आने, अगर पाथ नहीं है तो आप फिर एक ही साइड का लिमिट चेक करो, और राइट हैंड साइड लिमिट उसका इन्फिनिटी है। ठीक है, ये हो गया लिमिट के बारे में, और भी बहुत सारे एग्जांपल हम उसमें देखेंगे, बट हमें कंटिन्यूटी भी समझना है ग्राफिकल अप्रोच से। ठीक है, अब ये दिखता है सभी को, सो कंटिन्यूटी, व्हाट इज कंटिन्यूटी? ग्राफिकल अप्रोच, वी से f of x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू, पहले बोला कि पॉइंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो मेंटोस वाली एडवर्टाइज आपने देखी होगी, क्लास में बच्चा आता है पहले सीधा आता है तो सर बोलते हैं गेट आउट, लेकिन वही उल्टा आता है, उल्टे पैरों के से चल के आता है तो उनको लगता है क्लास के बाहर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं सिट डाउन। फिर वो एडवर्टाइज का जाना तो मेंटोस का आया, मेंटोस वाली जिंदगी। बट उससे तो हमें ये सीखने को मिला है कि सर ने वो कहां से आया और कैसे जा रहा है वो नहीं देखा, उसका प्रेजेंट पोजीशन देखा, प्रेजेंट पोजीशन। इस साइड में आता मतलब बाहर से अंदर आते हुए दिखा, इस साइड में यहाँ पे ये पोजीशन देखी, गेट आउट बोल दिया, लेकिन वो उल्टा ही आया था बट इस पोजीशन पे रुक गया है ना, इधर मुंह करके ऐसा, तो बोला सिट डाउन, मेंटोस वाली जिंदगी है ना। तो इस तरह से वो जो पॉइंट प्रॉपर्टी में बोल रहा हूँ, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, तो वो चीज है मेंटोस वाली। कौन सी? कि पोजीशन, पर्टिकुलर पॉइंट पे बोलो फंक्शन क्या है ना, पर्टिकुलर पॉइंट पे बोलना है फंक्शन क्या है। तो कंटिन्यूटी क्या है? हम कह सकते हैं f of x is continuous at x equals to a if we can draw, रियल एनालिसिस में ये पॉसिबल है, if we can draw the graph of a function on a paper without lifting a pen. विदाउट लिफ्टिंग अ पेन मतलब अगर मेरा ग्राफ इस तरह से, मतलब मुझे इस पॉइंट पे चेक करना है, इस पॉइंट पे है ना, ये पॉइंट पे, और मेरा जो ग्राफ है वो ये पॉइंट पे जो भी वैल्यू होगी स्मूथली चल रहा है, कोई ब्रेक नहीं है ना, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन मैं ग्राफ ड्रॉ कर पा रहा हूँ, दैट इज देन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हाँ, अगर इस पॉइंट पे पर्टिकुलरली ऐसा हो रहा है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक हो गया ग्राफ में और फिर यहाँ से शुरू हो गया, और अब ए पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, हो सकता है सिर्फ और सिर्फ ए पे ही वो ब्रेक दे दे, जैसे इस तरह से यहाँ फिर ब्रेक दिया और इस तरह से, ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब ग्राफिकल अप्रोच से क्या, अगर आप बिना हाथ उठाए किसी भी फंक्शन का ग्राफ पेपर बोलो, बोर्ड बोलो, जहां पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, देन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बस इतना सिंपल है। ठीक है, ये सेकंड वाली डेफिनेशन। ठीक है, लिमिट, कंटिन्यूटी। अब थर्ड, डिफरेंशिएबिलिटी, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, फिर से ग्राफिकल अप्रोच, इसे f of x is differentiable at x equals to a, again point property, if f of x is a smooth, if f of x is smooth फंक्शन भी बोलते हैं कभी कभी डिफरेंशिएबल फंक्शन को, at particular point. So if function is smooth at x equals to a, at x equals to a, फंक्शन स्मूथ होना मतलब क्या, उसका ग्राफ स्मूथ होना। तो यहाँ पे बताता हूँ, अगर एक फंक्शन है भाई, इस a पॉइंट पे मुझे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं चेक करना है, अगर मेरा ग्राफ ये है फंक्शन का, तो फंक्शन मुझे स्मूथ मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, है ना, कोई एजेस नहीं, कुछ नहीं, ब्रेक तो है ही नहीं, एज भी नहीं। बट अगर इसी पॉइंट पे अगर मुझे ग्राफ ऐसा है, एखादे फंक्शन का ऐसा गया और यहाँ से ऐसा आ गया, अब यहाँ पे ये फंक्शन स्मूथ नहीं रहा, स्पीड ब्रेकर आ गया, यहाँ पे एज आ गया, शार्प एज आ गया, और शार्प एज आया, इसीलिए यहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के लिए आपको उस पॉइंट पे फंक्शन स्मूथ चाहिए, मतलब उस पॉइंट पे शार्प एज नहीं चाहिए, डिसकंटिन्यूअस भी नहीं चाहिए और शार्प एज भी नहीं चाहिए। अब शार्प एज क्यों नहीं चाहिए, तो बेसिक और फंडामेंटल डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा डिफरेंशिएबिलिटी की,
है ना। और उसकी डेफिनेशन क्या बोलते हैं, डिफरेंशियबिलिटी मतलब क्या, एट एक्स इक्वल्स टू ये एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल मतलब क्या, कि एट एक्स इक्वल्स टू ये इस फंक्शन के ग्राफ को यूनिक टेंजेंट है। क्या बोला मैंने, यूनिक टेंजेंट है इस पॉइंट पे, इस फंक्शन के ग्राफ को यूनिक टेंजेंट मतलब डिफरेंशिएबल। अब यूनिक टेंजेंट का अगर मीनिंग आता है तो देखिए आप, अगर मैं किसी कोई ग्राफ स्मूथ ग्राफ निकाल दूं और इस पॉइंट पे मैं चेक करूं तो देखिए इस पॉइंट की वैल्यू जो भी होगी फंक्शन को, यहाँ पे यूनिक टेंजेंट मिल जाएगी भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वही सिचुएशन अगर शार्प एज वाली आ जाए, यही पॉइंट है ये, और ग्राफ इस तरह से है, इस कॉर्नर पॉइंट पे कितनी टेंजेंट होगी, इनफाइनाइट टेंजेंट होगी, एक से ज्यादा होगी। यूनिक टेंजेंट वाला मामला यहाँ पे गड़बड़ जाएगा, है ना। तो इनफाइनाइट टेंजेंट मतलब एक से ज्यादा अगर टेंजेंट है किसी पॉइंट को तो वो इनफाइनाइट ही होती है। अब इनफाइनाइट टेंजेंट और इनफाइनाइट टेंजेंट मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, and that's why differentiable function does not allow the sharp edge or discontinue। ध्यान में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, यस yes, sir. तो बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी हम किसे बोलेंगे, कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ स्मूथ है मतलब विदाउट लिफ्टिंग ए पेन तो आप निकाल ही रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम तो कंटिन्यूटी में चला गया विदाउट लिफ्टिंग ए पेन, बट विदाउट लिफ्टिंग पेन भी नहीं, यहाँ पे उससे ज्यादा रिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये ग्राफ में विदाउट लिफ्टिंग ए पेन निकाला बट फिर भी डिफरेंशिएबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे शार्प एज है। और शार्प एज का मीनिंग क्या, कि भाई डिफरेंशिएबल का मीनिंग क्या, कि उस पॉइंट पे उस फंक्शन के ग्राफ को यूनिक टेंजेंट है, बट जब भी शार्प एज आएगा तो यूनिक टेंजेंट नहीं रहेगी, वो केस वायलेट हो जाएगी, वहां पे इनफाइनाइट टेंजेंट आएंगे, एंड दैट्स व्हाई फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। कॉर्नर पॉइंट बोलो, शार्प एज बोलो, या जो भी बोलो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते। अब आते हैं थोड़े, अब एलिमेंट्री फंक्शन हो गए हमारे 5-6, है ना। लिमिट की डेफिनेशन हो गई कि भाई क्या है एलएचएल आरएचएल, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हो गई विदाउट लिफ्टिंग ए पेन वाली, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन हो गई कि शार्प एज नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, प्लीज आप कोई म्यूट कीजिए प्लीज। आवाज आ रही है सर। ओके ओके, सो यस, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और आपको बता दूं कि यही इसी तरह के और इसी टाइप के एग्जांपल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देंगे ना, बहुत मतलब बड़े कंसेप्ट वाला या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा नहीं है, उनको तो बेसिक नॉलेज चेक करना है। तो इस तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चन बट फंडामेंटल कंसेप्ट के बेस पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये जो फंक्शन है ना, इसको आप स्टेप फंक्शन या फिर इसको अलग नाम भी है, इस तरह का फंक्शन है। ये जो फंक्शन है ना, इसका मैंने जैसे ग्राफ निकाला है डायरेक्टली, बट आप ये भी देखते ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया है, ये फंक्शन ऐसे डिफाइन किया है। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 व्हेनेवर एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नहीं है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। एफ ऑफ एक्स इज 0 व्हेनेवर एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स इज -2 व्हेनेवर एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो 0 पे क्या वैल्यू है, 0 पे 0 वैल्यू। पॉजिटिव एक्स के लिए क्या है 2 ये ग्राफ, और नेगेटिव एक्स के लिए क्या है -2। चलिए ग्राफ आप खुद समझ सकते हैं कि मैंने ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश की, सपोज यहाँ तक आ गया, मुझे पेन उठाना पड़ेगा, ये 0 पे रखना पड़ेगा, 0 पे भी पेन उठाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे रखना पड़ेगा और फिर ड्रॉ, तो मुझे पेन उठाना पड़ा है ना। तो लिमिट की अगर बात करें हम, अभी यहाँ से लिमिट भी समझ में आएगा, जैसे डेफिनेशन में हमने देखा है। देखिए मुझे 0 पे अगर लिमिट चेक करना है, सपोज 0 पे, तो मैं एलएचएल और आरएचएल ऑब्वियसली चेक कर दूंगा, है ना, एलएचएल और आरएचएल। यही से आप चेक करके देखो, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लिमिट चेक करता हूं तो ग्राफ देखो पैरेलली ये आ रहा है, ये आ रहा है ना। मतलब आपको y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, आपका ग्राफ ये वैल्यू देगा -2 लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि आपका ग्राफ इस साइड में आ रहा है ना, -2 राइट। और राइट हैंड साइड अगर लिमिट लेते हैं, मतलब इस तरह से आप अप्रोच होते हैं 0 की तरफ, तो आपका ये ग्राफ है, तो ये तो 2 वैल्यू देगा, है ना। तो नॉट इक्वल RHL, LHL is not equals to RHL, and that's why limit does not exist at x equals to 0 for this particular function. Limit does not exist at x equals to 0. But बाकी किसी पॉइंट पे इस फंक्शन को कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये क्लियरली कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, लिमिट एग्जिस्ट, सब कुछ। मतलब अगर इस पॉइंट पे आप चेक करेंगे, ये देखिए राइट हैंड अप्रोच, तो ये ग्राफ आएगा यहाँ तक, ये लेफ्ट हैंड था, ये राइट हैंड अप्रोच, तो ग्राफ आएगा इस तरह, तो यहाँ पे कोइंसाइड हो जाएगा, एक वैल्यू मिल जाएगी,
है ना। तो x ग्रेटर देन 0 आप किसी भी पॉइंट पे चेक करेंगे तो लिमिट भी एग्जिस्ट है, कंटिन्यूअस भी है फंक्शन, विदाउट लिफ्टिंग पेन में ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ कितना भी बड़ा, है ना, पर्टिकुलरली ग्रेटर देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए भी सेम, है ना। तो कंटिन्यूअस भी है विदाउट लिफ्टिंग पेन और डिफरेंशिएबल भी है। स्ट्रेट लाइन को कहां शार्प एज है, कहीं कहीं पे शार्प एज नहीं है, कोई कहीं पे कॉर्नर पॉइंट नहीं है, एंड दैट्स व्हाई फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, बट द फंक्शन हैज अ प्रॉब्लम at x equals to 0 only, at x equals to 0 only। ये आपका कैलकुलेशन वाला हिसाब जो भी है ये जैसे निकाला है, ठीक है ना, ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड इस तरह से, ठीक है। वैसे ही दूसरा फंक्शन का ग्राफ अगर देखेंगे हम, ये वाला अगर मैं 1 पे चेक करूं पर्टिकुलर, ठीक है, ये जो ग्राफ मैंने डिसकंटिन्यू किया या ब्रेक दिया ग्राफ को, तो लिमिट के बारे में अगर सोचेंगे तो 1 की तरफ अप्रोच होता हूं मैं, तो मुझे ये वाली वैल्यू यहाँ तक आ जाऊंगा मैं, है ना, और राइट हैंड अप्रोच होता हूं तो इस तरह से, राइट इस तरह से। बट ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि विदाउट लिफ्टिंग अ पेन मैं ये ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकता, है ना, जो भी फंक्शन मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, बट इस तरह का ग्राफ है तो डिसकंटिन्यूअस। ऑब्वियसली एट x इक्वल्स टू 1 फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन है फंक्शन पहले तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन। और तीनों कंसेप्ट में एक बेसिक डिफरेंस जो मैं बताना भूल गया, ठीक है, लिमिट चेक करने के लिए एट x इक्वल्स टू, जब भी आप लिमिट चेक करते हैं जरूरी नहीं कि ये पॉइंट आपका डोमेन का ही हो, जरूरी नहीं है कि ये डोमेन का पॉइंट हो तो ही हम लिमिट चेक कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, है ना। वो लिमिट पॉइंट भी हुआ डोमेन का तो भी चलेगा। मतलब ओपन इंटरवल 0 1 एखादे किसी फंक्शन का डोमेन है तो आप 0 पे और 1 पे लिमिट चेक कर सकते हैं, जबकि वो 0 और 1 इस डोमेन में है भी नहीं। हाँ, वो जो लिमिट चेक करते हैं आप, वो जिस पॉइंट पे भी चेक करते हैं वो लिमिट पॉइंट होना जरूरी है, और 0 और 1 इस सेट का लिमिट पॉइंट है। इसके लिमिट पॉइंट का सेट अगर लिखूं मैं ओपन इंटरवल 0 1 के तो क्लोज इंटरवल 0, बट ये होगा लिमिट की बात, है ना। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में सेम ये है कि इनको डोमेन का ही पॉइंट चाहिए, डोमेन के बाहर के पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं कर पाएंगे, तो लिमिट के लिए किसी भी पॉइंट को जहां पे आप लिमिट चेक कर रहे हैं वो जरूरी नहीं कि डोमेन का पार्ट हो, बट इट शुड बी द लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन। बट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए डोमेन का ही पॉइंट है, तो ये आगे बात करेंगे, नहीं तो बात नहीं करेंगे। ये डिफरेंस है लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। अब ये थर्ड ग्राफ आप खुद बताओ, जो मैंने कैसे भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कितने और किस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखो विदाउट लिफ्टिंग अ पेन मैंने ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया तो कंटिन्यूअस तो हो गया, और कंटिन्यूअस हो गया इसका मतलब लिमिट तो उसका क्लियर है, लिमिट तो एग्जिस्ट होगा ही होगा। बट डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है, ये देखिए -3/2 पे एक शार्प एज है, मतलब इनफाइनाइट टेंजेंट, एक 1 पे शार्प एज आता है इस ग्राफ को, मतलब इनफाइनाइट टेंजेंट, इस पॉइंट पे भी मतलब ये 3/2 पे भी शार्प एज है, तो इस पॉइंट पे भी, मतलब जहां जहां आपको शार्प एज दिख रहे हैं उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बट मैं विदाउट लिफ्टिंग अ पेन ग्राफ ड्रॉ कर पाता हूं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। आर गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आपके जान पहचान का फंक्शन मॉड एक्स फंक्शन सभी ने सुना होगा, है ना, मॉड एक्स फंक्शन सभी ने सुना होगा, लेकिन मैं आपको 2-4 रूल यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ग्राफ कैसे ड्रॉ होते हैं, है ना। और वहां से फिर जैसे एक आप ये समझ के लीजिए कि IIT जाम हो, CSIR नेट हो या सेट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां पे एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, इस क्वेश्चन को देखो और फिर हम जो कंसेप्ट देखते हैं उनको देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे mod x - 2 प्लस साइन ऑफ mod x प्लस या माइनस जो भी cos ऑफ mod x - 2 नहीं लिखूंगा यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5 सपोज माइनस e पावर mod x - 10, ये वाला फंक्शन है इतना बड़ा। ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं एग्जाम में। अब ये फंक्शन दे दिया आपको इतना बड़ा जिसमें मॉड वगैरह सब दे दिए, है ना, साइन भी दिया, एक्सपोनेंशियल भी दिया, चलो लॉगरिथमिक भी ऐड कर लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ, ठीक है, और इस तरह के फंक्शन दिए। अब इस फंक्शन को आपको चेक करना है, सपोज ये इसका लिमिट किस पॉइंट पे एग्जिस्ट है और किस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं है, ये फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस है और कहाँ कंटिन्यूअस नहीं है, ये फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल है और कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, बताओ क्या करेंगे आप, है ना। तो जरूरी है कि आपको ये जो मॉड वगैरह आते हैं इस टाइप के फंक्शन के
ग्राफिकल अप्रोच से अगर पता है तो इसको कुछ टाइम नहीं लगेगा, बस मतलब ग्राफ भी ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, यहाँ यही के ही हम बता देंगे कहाँ डिसकंटिन्यूअस है या कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये हमें फाइनली हमारा ये जो लेक्चर पूरा होगा तो ये फाइनली क्वेश्चन हमारा सॉल्व होना चाहिए। बस इसी अप्रोच से मैं जाना चाहता हूँ अभी। ठीक है, अब एक ट्रैक मिल गया हमें कि ग्राफिकल अप्रोच से देखेंगे। अब देखिए पहला रूल एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे निकालना, मतलब जैसे नोन ग्राफ है आपका एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आपको पता है, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता है आपको, और आपको निकालना है एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ, है ना। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो एफ ऑफ मॉड एक्स क्या होगा, मॉड एक्स होगा, मतलब फंक्शन भी वही है ना, राइट। तो इस तरह का ग्राफ कैसे निकालना है, बहुत सिंपल सा रूल है, याद रखे, मतलब आपको याद रहेगा तो जरूर रखिए, ज्यादा कुछ प्रिपरेशन की जरूरत नहीं। सी, सबसे पहले एलिमेंट्री फंक्शन का ग्राफ पता होना जरूरी है। एक्स का ग्राफ हमें सबको पता है क्या होता है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये वाली लाइन बराबर है, या माइनस एक्स अगर है तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये वाली लाइन। अब नहीं शायद ऐसा, ठीक है, ये वाली लाइन, हाँ, पॉजिटिव को पॉजिटिव वाल देगा, नेगेटिव को नेगेटिव वाल देगा, ओके, ये वाली लाइन, ये किसका ग्राफ है भाई, y इक्वल टू एक्स का। ठीक है, मैंने निकाल लिया, मैं जा रहा हूँ रूल की तरफ। कहाँ रूल, क्या है रूल, हमें एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ सीखना है। ठीक है, तो पहला रूल क्या बोलता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। तो मैं नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो मैंने जो पूरा ग्राफ निकाला है वो निकाल देता हूँ, और ओनली फॉर पॉजिटिव, ओनली फॉर पॉजिटिव, चलिए ड्रॉ किया, ओनली फॉर पॉजिटिव, ठीक है, ओनली फॉर पॉजिटिव। After that, just take the reflection of drawn graph. Consider y-axis as a mirror. इस वाले ग्राफ का सिर्फ रिफ्लेक्शन ले लो आप, y को मिरर कंसिडर करो, y-axis को, और इसको अगर मैं मिरर कंसिडर करता हूं तो ये है ना, इसका उल्टा, मतलब इसका सिमेट्रिक पोर्शन इधर आएगा, ये तो मिरर है हमारा आईना, है ना, तो इस तरह से दिखेगा। यही तो है आपका मॉड एक्स, यही तो ग्राफ है आपका मॉड एक्स। Are you getting my point? Yes or no? Yes or no? है ना? Yes, sir. अब आते हैं लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ। तो मेरा ग्राफ तो जीरो पे भी ज्वाइन हो चुका है, और विदाउट लिफ्टिंग अ पेन मैं तो ड्रॉ कर पा रहा हूँ, तो कंटिन्यूअस तो हो गया, तो लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं मुझे, मतलब होगा ही लिमिट एग्जिस्ट, फंक्शन ही कंटिन्यूअस हो गया, तो लिमिट क्या चेक करें, लिमिट तो एग्जिस्ट हो गई, वो तो नेसेसरी कंडीशन है फॉर कंटिन्यूटी, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। क्या ये डिफरेंशिएबल है, क्या ये डिफरेंशिएबल है, तो बाकी सारे पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है, बट x इक्वल टू 0 पे हमें यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे शार्प एज मिला है, और जहां पे शार्प एज मिलता है बेटा वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, राइट। सो व्हाट वी कैन से हियर, द f of x इक्वल टू mod x is not differentiable at x इक्वल टू 0, at x इक्वल टू 0। बाकी सारे सेट ऑफ रियल नंबर के पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल सब कुछ है, आर स्टार पे डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस सब है, बट आर स्टार मतलब नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, लेकिन जीरो पे शार्प एज मिला, यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है बिकॉज ऑफ शार्प एज। चलिए रूल समझ में आया क्या, ये एफ ऑफ मॉड एक्स, मतलब इतना सिंपल भी है नहीं है, मैं फंक्शन देता हूँ आपको, जैसे ग्राफ निकालना है हमें, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं, मैं यहीं पे एक स्लाइड ले लेता हूँ और आपको, ओके, यहाँ पे हम किसका ग्राफ निकालेंगे, एक इंटरेस्टिंग पोर्शन है, अगर आप अच्छे से समझ में आया तो, ठीक है, हम ग्राफ निकालेंगे अभी इसका साइन ऑफ मॉड एक्स का। चलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड एक्स, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है इसका, है ना। साइन एक्स का तो हमें पता है, साइन एक्स का यहाँ पे, चलो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, 0 से पास होगा इस तरह से, है ना, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, आप समझ लो मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से मतलब ग्राफ है साइन एक्स का, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट रूल क्या कहता है, अगर आपको एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ निकालना है बाय नोन ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन ड्रॉ द ग्राफ ओनली फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मैंने नेगेटिव को क्यों निकाला, मिटा देता हूँ, अब हो गया मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए ग्राफ साइन एक्स का। टेक द रिफ्लेक्शन कंसिडर एज अ मिरर वाई एक्सिस, चलो रिफ्लेक्शन ले लेता हूँ, आईना, है ना, ये है साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ।
ये है साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। और अगर आपको मैंने ये पूछा कि साइन ऑफ मॉड एक्स कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है या फिर कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन मैं ग्राफ तो ड्रॉ कर पाऊंगा ये पूरा। देखो मैं यहाँ से स्टार्ट किया, मुझे यहाँ पे भी पेन उठाने की जरूरत नहीं, जीरो पे कंटिन्यू शुरू, ठीक है। बट मुझे ये जीरो पे शार्प एज दिखता है। क्या दिखता है? शार्प एज, कॉर्नर पॉइंट। And that's why at x equals to 0, sine of mod x is not differentiable. Not differentiable. बस इतना सिंपल है। अब आप अगर इप्सिलॉन डेल्टा वाले डेफिनेशन में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो टाइम भी बचाना है किसी एग्जाम में, या कंसेप्ट भी समझने में, सिर्फ एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कंसेप्ट भी समझने में। तो ये चीज होती है कि ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट x equals to 0। इवन अगर मैं इसे जनरलाइज करता हूं, साइन ऑफ मॉड x माइनस a, तो एट x equals to a ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जहां पे भी ये मॉड वाला 0 बनेगा ना, वहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे कि आपको IIT जैम में एक क्वेश्चन पूछा था, x² - 4 साइन ऑफ मॉड ऑफ x² - 4 और डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल यही पूछा। एट x equals to 2 only 5 minutes remaining. Only 5 minutes. तो ये 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, बस इसके रूट्स निकालो या ये कहाँ पे 0 होता है वो देख लो। ये है, हो गया एक रूल। मैं फास्ट में आपको इसी रूल का एक और ग्राफ निकाल के बताता हूँ, और आगे का रूल हम कंप्लीट कर लेंगे 2-3 मिनट में, ठीक है। अगर मुझे ग्राफ निकालना है भाई ई पावर मॉड एक्स का, है ना, तो ई पावर मॉड एक्स, ठीक है। तो मेरा ई पावर एक्स का ग्राफ होगा इस तरह से इंक्रीजिंग। मला खूप आनंद होत आहे, कारण लोकांची गर्दी किती आहे यापेक्षा कोणती लोक कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत त्याचा मला सार्थ अभिमान आहे। म्हणून तुम्हाला सर्वांची त्यांनी नमस्कार करतो आणि वास्तव कोण सगळ्यांना विनंती करतो की आपण समोर यायचं। ओके प्लीज, ठीक है। अगर मुझे इसका ग्राफ निकालना है तो मैं ई पावर एक्स का ग्राफ निकालूंगा ओनली फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये यहां तक आ जाएगा और इसको रिफ्लेक्ट कर दूंगा यहां से, ठीक है। तो ये बन गया ई पावर मॉड एक्स। लॉग ऑफ मॉड एक्स निकालना है मुझे। मेरा लॉग एक्स का ग्राफ है, मतलब ए को मैं ग्रेटर देन 1 वही बेस वाला इंक्रीजिंग ले लेता हूं। अब ये तो पूरा का पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ऑलरेडी है, यहाँ पे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा नहीं ग्राफ, बस इसका रिफ्लेक्शन ले लो वाई एक्सिस। ये जो दोनों मिला के बनेगा ना, ये बन गया आपका लॉग ऑफ मॉड एक्स। तो इस तरह से एक पहला रूल है एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ निकालने के लिए, ठीक है। अब सेकंड रूल की हम बात करते हैं। ये देखिए मैंने निकाले, ये साइन ऑफ मॉड एक्स है, ये कॉस ऑफ मॉड एक्स का है, जो कि हमें सेम मिलता है। या दीदीचं स्वागत करावं, कारण सुभाष शिंदे सर आमच्या सर्वांचे मार्गदर्शक आहेत आणि सरांचा मुलगा सध्या उपजिल्हा, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है ना, ठीक है। आपको इवन और ऑड फंक्शन का पता है। इवन जो साइन फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है, एंड दैट्स व्हाई ग्राफ इज डिफरेंट, राइट। नेगेटिव साइन वो मैटर करेगा, लेकिन कॉस एक्स फंक्शन में ग्राफ सेम मिलता है। ओ मग येतो तुला ताम तोलाचा, सगळी जीभ खराब झाली। ठीक है, ओके। ये ई पावर मॉड एक्स का जो मैंने अभी दिखाया आपको, है ना, और लॉग ऑफ मॉड एक्स का भी मैंने अभी ग्राफ आपको दिखाया। अब सेकंड जो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन मैंने पहले बताई आपको, है ना। अब सेकंड रूल मतलब क्या कि एफ ऑफ एक्स का ग्राफ अगर पता है तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का कैसे निकालते हैं। मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इट इज डिफरेंट फ्रॉम एफ ऑफ मॉड एक्स। ये अलग है, ये अलग है। आपको टॉपिक भले ही नया या कुछ अलग लग रहा होगा, बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसलिए टाइम कम लगता है, ठीक है। अब एफ ऑफ मॉड एक्स अलग और मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स अलग। इसका रूल क्या कहता है कि नॉन ग्राफ एफ ऑफ एक्स, जैसे साइन एक्स पे हमने ये ट्राई किया, साइन मॉड ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ मॉड एक्स अलग और मॉड ऑफ साइन एक्स अलग, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसे निकालेंगे? पहले तो साइन एक्स का ग्राफ निकालो। साइन एक्स का ग्राफ ये जो निकाला, ये रेड कलर में, ठीक है। ये साइन एक्स का, सॉरी ये वाला साइन एक्स का ग्राफ, ये जो निकाला साइन एक्स का ग्राफ निकाल लो। उसके बाद क्या करना है आपको, जो भी बिलो एक्स एक्सिस पोर्शन है, बिलो एक्स एक्सिस पोर्शन है, वो डिलीट कर दो। मतलब ये वाला
ये वाला डिलीट कर दो, पहले sin x का ग्राफ निकालो, फिर बिलो x एक्सिस जो पोर्शन है उसको डिलीट करो, लेकिन डिलीट करने के पहले उसके रिफ्लेक्शन ले लो ऊपर, और कुल मिला के जो भी बचता है इस तरह से, ये है मॉड ऑफ sin x का ग्राफ। आपको पता नहीं होगा शायद इस फंक्शन पे कितने क्वेश्चन पूछे हैं और किस तरह से क्वेश्चन, इनवेरिएबल क्वेश्चन। इस मॉड ऑफ sin x का पूछा है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट, और इसके नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट इतने सारे, इनफाइनाइट है, काउंटेबल इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे शार्प एज, यहाँ पे शार्प एज, यहाँ पे शार्प एज, शार्प एज, शार्प एज, शार्प एज, शार्प एज, तो n पाई पे ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। कहाँ पे? n पाई पे, n इज इंटीजर। 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो पाई आएगा, -1 रखेंगे तो माइनस पाई आएगा। इस तरह से कॉस फंक्शन भी सेम, बट उसके पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वो अलग होंगे, क्योंकि उसका ग्राफ अलग आएगा। इस तरह से जैसे cos x का मैंने ग्राफ निकाल लिया पहले, तो ये वाला, फिर बिलो x एक्सिस पोर्शन डिलीट किया, डिलीट करने से पहले उसके रिफ्लेक्शन ले लिए, मिरर एज एक्स एक्सिस, ये ग्राफ बन गया। और ये जो है ये नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है इसके 2n+1 π/2 वेयर n इज इंटीजर। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। आपको ऑप्शन में ये दिखेगा, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, फिर 4 ऑप्शन, n पाई, ये पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सपोज ये, थर्ड ऑप्शन अलग है ना, फोर्थ ऑप्शन अलग। तो आपको ये टिक करना है सब, क्योंकि अगर ये ग्राफिकल अप्रोच से पता है तो सेम मॉड ऑफ e पावर x का सेम ग्राफ आता है। मॉड ऑफ log x का, मॉड ऑफ log x का रूल क्या है? चलो log x का ग्राफ निकालो, बिलो पोर्शन डिलीट करो ये वाला, और इसका रिफ्लेक्शन ले लो इस तरह, मतलब इस साइड में नहीं जाएगा, इस साइड में, ऐसे ये वाला ग्राफ बन जाएगा। फाइनली मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, लास्टली गेट एग्जाम में पूछा था ये वाला क्वेश्चन, जैसे मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड x इक्वल्स टू 1, इसके कितने रूट्स होंगे? इस फंक्शन के कितने रूट्स होंगे? जब मैंने मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड x का पूरा ग्राफ किया, जैसे पहले तो मैं लॉग ऑफ मॉड x का निकालूंगा, तो सबसे पहले मुझे लॉग x का ग्राफ पता चाहिए, चलो ये निकाला। फिर लॉग ऑफ मॉड x का, चलो रिफ्लेक्शन ले लिया, कंसीडर y एक्सिस एज अ मिरर, पहला रूल ये किया। फिर मैं मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड x की तरफ जाऊंगा, तो ये मेरे पास है ही अभी। अब इसका अगर मैं फाइनल ग्राफ निकालूं तो मुझे बिलो x एक्सिस पोर्शन डिलीट करना पड़ेगा और इसके रिफ्लेक्शन ऊपर लेने पड़ेंगे, तो ये बन गया फाइनल ग्राफ। और इस साइड में क्या है? 1, y इक्वल्स टू 1, मैं लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? तो 1 2 3 4, इसका मतलब इसको 4 रूट्स है। अब विश्वास रखो, ये जो कंसेप्ट है ग्राफिकल अप्रोच, इतने काम में आने वाली है, मतलब इतने जगह पे इसका यूज है। मैंने तो एक ही आपको डायरेक्शन बताने की कोशिश की कि भाई डिफरेंशिएबिलिटी या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में काम में आता है, ये फिक्स पॉइंट कितने हैं फंक्शन के, क्या है, कैसे, उसके काम में आता है, फंक्शन का बिहेवियर चेक करने में काम आता है। बहुत सारी चीजों के लिए ग्राफिकल अप्रोच फंक्शन का काम में आता है, ना कि सिर्फ लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। आर गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। एक ए बी फंक्शन बड़ा फेमस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि इंटीजर पे इस तरह से इसका नोटेशन होता है, और इंटीजर पे ये मतलब इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होता है इंटीजर पे, तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो इंटीजर पे प्रॉब्लम है सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब वो कैसे क्या, तो टाइम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट होता है हमारे लिए, है ना, टाइम थोड़ा सा कम है, तो सर ने 5 मिनट बोले थे। अगर टाइम है तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, और अगर टाइम नहीं है तो यहाँ तक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हेलो जवान सर। हेलो सर। हाँ सर। इंग्लिश सर नाही का? इंग्लिश सर. So excellent lecture given by Dr. Mapari sir. He has given the data which is very useful for the future research academic area. So he
solve all difficulties of limit point function. हो रडत नाही रडत नाही रडत नाही So रडत any नाही. questions from students and audience? So you ask. Any questions? You ask. No, sir. हो Yes. हो 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 हो. If you have any question, you can ask. No, sir. Thank you. Okay, so I would like to thank you very much, organizing team and Chavan sir, Dr. Satish Chavan sir. Thank you very much for giving me opportunity. Hello, Yes, sir. हाँ sir. Today is the first lecture on national level lecture series. Yes. I am very much thankful Dr. Mapari sir. He delivered very nice lecture for our students and behalf of our college and departments of mathematics for accepting our invitations and discuss various aspects, limit, continuity, discontinuity, and graphical representations of various functions. He shared with our students his deep insight into the topics. Thank you very much, sir. And I am also thankful to Dr. Aryan English, sir, ex-BOS chairman, Swami Ramanand Tirth, Marathwada University, Nanded, for chairing this session, and he is ready to help to the national level lecture series. Thank you very much, sir. Dr. English, sir, thank you. PhD NET. ओके सर, और इस तरह के Okay, कुछ sir, okay. वीडियोस आपको Yeah, देखने okay. हैं, जैसे बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल कंसेप्ट, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल पे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम राहुल मापारी है, आप सर्च कीजिए। इसेंस ऑफ मैथमेटिक्स पे मैंने ज्यादातर वीडियो बनाए, एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स, लीनियर, अलजेब्रा, ओडी, पीडी, सारे सब्जेक्ट पे आप जरूर देख लीजिए। कंसेप्चुअल डिस्कशन वहां पे है सिर्फ, तो आप अगर चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, So thank you once again. थैंक यू Sir, Deshmukh sir. Hello. Hello. Deshmukh sir. Hello, sir.